रिपीट करते हैं, इस तरह से करते हैं। क्या क्या? यूनिवर्सल इन्वोकेशन आप एक लाइन बोलेगी, फिर हम रिपीट करेंगे, हाँ या हाँ, साथ में ओके। कैसे? व्हाटएवर वे यू वांट। हाँ, मतलब कोई सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं बोल के थोड़ा वेट करूंगी। आप मन ही मन करिए, फिर मैं नेक्स्ट कर। ठीक है, विल डू योर वे। टाइम हो गया, कर ले। 1 मिनट बस, हम यूट्यूब पे ऑन हो जाए तो पहले वर्ड से आ जाएगा सब। ऑन हो गया ऑलमोस्ट, मुझे खाली उसका साउंड ऑफ करना रहता है, नहीं तो डबल डबल आ जाता है। ओके, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब नाउ, वील बी recording also. The moment you hear the recording is on, please go ahead. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant Oh, in hidden every light, atom. shining in every creature. Oh, hidden light. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each May each who feels himself as one with you. No, he is therefore one with every other. know who. No, he is therefore one with every other. Let's observe silence for a couple of minutes. Namaste, everyone. नमस्ते, Welcome back. वेलकम टू ऑल। एंड अभिनव जी, हाँ आप भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, तो मैं तीनों का वेलकम करता हूँ। और आज की ये बहुत दिनों बाद वाईआईटी की मीटिंग हो रही है, बहुत खुश हैं हम सब लोग। और बस आप लोगों को सुनने के लिए ओवर टू कौस्तुभ फॉर मॉडरेटिंग, एंड लेट्स स्टार्ट। Thank you, Karanji. Hope I am audible. या लाउडली स्लाइड। Yeah, I'll try to keep my mic closer. Uh, I'll try to keep it in a mixture of Hindi and English to address the broader audience. I can see Merike has joined the call as well. Great to see you, Merike, and a warm welcome to everyone on the call, especially our speakers, Smita, Kritika, and Abhinav. Great to see all of you again here as we come together. I think a very pertinent issue which Smita and the speakers have picked up today, a thing which is not close to our hearts, but something which we face on a daily issue as this generation undergoing massive changes across the world, both mentally, physically, psychologically, the challenges that we come across with these. So yeah, great pick of topics, and I hope the content which our speakers put forth today help spread the word across and provides guiding light to others even. Over to Smita, our first speaker. In the interest of time, I'll try to keep it short. To introduce SMITAPRAGYAN PATRO, she is the member of Pythagoras Youth Lodge from Bhubaneswar. First came in contact with Theosophy in 2005. Uh, was guided by Pradeep uncle and Mitalini auntie here. Became a member in 2006. Has been the youth coordinator of YIT, the Indian section. And she's also the country representative of World Federation of Youth Theosophists. Editor of our magazine, Turia, the latest edition of which will soon be live. So heads up to everyone, please watch out for it. National, and it is our national youth magazine of the Theosophical Society. She has organized many youth camps in places, recently at Bhubaneswar a few months back, and then previously at Hyderabad, Bhavali, and Bangalore. Over to you, Smita.
Thank you, You're on Kaustubh. mute. Thank you for the nice introduction. Namaste, everyone. So today's topic is, as Kaustubh already told, and you all know that, challenges of youth and theosophical solutions. So I'll begin with a beautiful quote. Thy soul has to become as the ripe mango fruit, as soft and sweet as its bright golden pulp for others' owes, and as hard as that fruit's stone for thine own sorrows. I feel this quote beautifully describes what humanity needs today: softness toward the suffering of others, and strength in facing our own difficulties. Today, I would like to speak about the challenges faced by modern youth and the solutions that Theosophy offers to humanity. But this is not merely a talk about stress, anxiety, and suffering. It is a reflection on the way we are living, the kind of society we are creating, and the direction in which humanity itself is moving. Especially today, young people are facing confusion, pressure, insecurity, loneliness, comparison, emotional exhaustion, and fear on a scale perhaps never seen before. And therefore, it becomes important for us to ask, why is this happening? Why even, and even more importantly, what is the solution? Because unless we understand the root cause of suffering, no lasting solution is possible. Today, when we look around, stress has almost become a normal part of life. Students experience stress regarding studies, examination, placements, and future uncertainty. Working people experience stress regarding careers, promotions, financial security, and social expectations. Even children today experience pressure at very young ages. As you know, nowadays, many people, because of this economic crisis and the recession is going on, many people have lost their jobs, and many students who passed their examination, who qualified in some studies, education, they have also worried because they are not getting any jobs. And some experienced people, those who have experience, they are also not, whenever they are trying to switch a job, they are not getting any opportunity to switch their jobs. And because of that, the stress, anxiety, depression, everything comes in between. So now, certainly, a small amount of stress is natural and even necessary. If a student has examination approaching, some degree of pressure encourages preparation and discipline. But the problem begins when stress no longer remains temporary. It slowly becomes a permanent condition of the mind. And when that happens, the consequences become serious. Let's say I'm giving a live example, because I have lost my job in December. And since then, I'm joining a company and then leaving that job, again joining another company and leaving that job because of no job satisfaction and the toxic environment and all. Till now, you can say I'm not working. And sometimes, yeah, I know, sometimes it's very frustrating at having 14 years of experience in the same field. I'm not getting any job, any opportunities, it's everywhere rejection. But if I stay in this situation all the time, then I don't think I can work. I can prepare for the job that is coming for me. So this is the thing we should understand. We need to understand. Sometimes I feel very stressed, upset. I don't want to do anything. And I just sleep, eat. I don't want to talk to anyone, but I don't stay there longer. I mean, I'm not saying that
I'm doing something great thing. No, but I know that if I'll stay in that situation or in that state of mind for a longer time, I cannot excel in the next what is coming for me. So I'm preparing myself for the next job or next opportunity what is coming to me. So this is the thing I want to tell everyone. And this didn't come overnight. It comes through practice and understanding. Okay. So that is the thing which I am facing nowadays. But if we observe carefully, we may discover something very important. The real struggle is often not outside us. The real struggle begins within the mind itself. A student worries, what if I fail? What if others become more successful than me? What if society think about me? A working person worries, if I don't succeed, I may fall behind. If others progress faster than me, what will happen to my future? And gradually, without realizing it, life becomes a race of comparison. We compare our achievements, our appearance, our careers, our wealth, our lifestyles, and even our happiness. Earlier, perhaps a person compared themselves only with neighbors or relatives. But today, through social media, comparison has become constant. People compare what they see without knowing the reality. What they see in the social media, maybe that is just a show off. That is just to show the society, to show the neighbors, to show the friends. But that may not be the reality. But we are carried away by those fake, you can say, I'll not say that completely fake, but it is maximum of it is fake. Maximum, the smile at the some person is traveling and enjoying their lives, and they are showing it in social media, and we are affected. We compare ourselves with that without knowing, is it real or it's just a show off? So every day, young minds are exposed to hundreds of images showing success, luxury, beauty, fame, relationships, and seemingly perfect lives. I repeat, every day, young minds are exposed to hundreds of images showing success, luxury, beauty, fame, relationships, and seemingly perfect lives that might not be perfect. And unconsciously, the mind begins to feel inadequate. I'm not successful enough. I'm not attractive enough. My life is not meaningful enough. But what we often forget is that social media mostly shows appearances, not reality. Behind smiling photographs may exist loneliness. Behind success may exist anxiety. Behind luxury may exist emptiness. Yet, when the mind continuously compares itself with others, peace slowly disappears. And perhaps this is one of the greatest psychological burdens carried by modern youth today. Sometimes I personally feel that many young people are not weak by nature, they are simply mentally exhausted. Outwardly, they smile, interact, and continue functioning normally. But inwardly, many are carrying silent fear, confusion, pressure, and loneliness that nobody notices. And therefore, instead of merely criticizing youth, perhaps we must begin understanding them more compassionately. Now, naturally, we begin saying, I'm stressed because of studies, I'm stressed because of work, I'm stressed because of family responsibilities. But if we go deeper, we may discover that studies, work, or responsibilities are not always the real causes of suffering.
Very often, the deeper cause is psychological. It is our endless desire, comparison, expectation, fear, attachment, and dissatisfaction. One desire gets fulfilled, and immediately another takes its place. And this endless movement of desire keeps the mind restless. There is a beautiful story which explains this wonderfully. Once there was a king who came out of his palace and saw a beggar. The king proudly said, "Today I am very happy. Ask whatever you desire, and I shall fulfill it." The beggar replied, "Think carefully before making such a promise." But the king insisted. The beggar then showed him a bowl and said, "If you truly wish to help me, then simply fill this bowl." The king laughed and ordered his servants to fill the bowl with gold coins. But as soon as the coins were poured in the bowl, they disappeared. More gold was brought. Again it disappeared. This continued until almost the entire treasury became empty. Finally, the shocked king asked, "What kind of bowl is this? Which material this is made up of?" The beggar quietly replied, "This bowl is made from human desire, and human desire can never truly be filled." And perhaps if we honestly observe our own lives, we may discover the same truth. If we own a bicycle, we desire a motorbike. If we own a motorbike, we desire a car. If we own a car, we desire a luxury car. The object changes, but the restlessness remains the same. And slowly we stop enjoying what we already possess because the mind is constantly running toward what is still missing. Perhaps we should ask ourselves honestly, how often do we truly appreciate what we already have? How often do we experience gratitude? How often do we live peacefully in the present moment? This reminds me of another meaningful story. I don't know whatever stories I'm telling you, those are not my stories. I have read somewhere or heard somewhere. So the story is about 99 Club. The story is 99 Club. So once there was a king who possessed wealth, luxury, and power, yet inwardly remained unhappy. One day he saw a servant joyfully singing while working. The king became curious and asked, "How can you remain so happy despite having so little?" The servant replied, "Your Majesty, my family has food to eat, a roof over our heads. What more do we truly need?" The king could not understand this happiness, so he approached his advisor. The advisor smiled and said, "Your Majesty, perhaps the servant has not yet become a member of 99 Club." The king asked, "What is 99 Club?" The advisor instructed him to secretly leave a bag containing 99 gold coins outside the servant's house. As per the instruction, a bag of 99 gold coins were kept at the door of the servant's house. The servant discovered the bag and became overwhelmed with joy. But when he counted the coins, he noticed something. There were only 99. Immediately his mind became disturbed. One coin is missing. Certainly, no one will put 99 coins in the bag. From that moment, his peace disappeared. He began working endlessly to obtain the 100th coin. He stopped singing. He stopped enjoying life. Seeing him, the king was surprised and asked his advisor, to which he replied, "Your Majesty, he is now officially a member of 99 Club." The advisor then explained, the 99 Club consists of people who have enough to live happily, but never been content because they are always chasing one more thing. And perhaps this story reveals something very deep about modern humanity. The problem is not merely lack of possessions. The deeper problem is inner dissatisfaction. We have
forgotten how to live in the present moment. In The Light on the Path, it is written, kill out ambition, and again, kill out desire for comfort. This does not mean comfort itself is wrong. The real danger begins when desire becomes endless and begins controlling the mind. Because then happiness always remains somewhere in the future. And a mind constantly chasing the future can never remain peacefully in the present. Thank you. Thank you so much, Smita, for that lovely first half. I really liked how you have interspersed story into it to make it more relatable to the youth. And I guess it will be a great help to a lot of people joining in today. Up next, we have Abhinav, who will be speaking in Tamil. He is a member of Adiyar Lodge, a very learned guy whom I've had the opportunity of meeting at the youth convention at Adiyar. Very learned person in Sanskrit as well. And yeah, that is his introduction from my side. Over to you, Abhinav. Okay. The host is being too gracious. I only said that please mention that I'm a member of the Adayar Lodge. He added some unnecessary, probably untrue details. So I will continue in Tamil. இப்போ சொல்ல போற விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆனதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப அபிஷியலா இருக்கிற மாதிரி தோணலாம். ஆனா இது ரெக்கார்ட் பண்றதுனால கொஞ்சம் அபிஷியலா தான் சொல்லணுங்கிற கட்டாயத்தினால அப்படி சொல்லப்படுகிறது. இளைஞர்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரம்ம வித்யா, அதாவது தியாசபியில இருக்கிற அதுக்கு உண்டான தீர்வுகளை பத்தி தான் இப்ப சொல்ல போறோம். இதுக்கு முன்னாடி, அதாவது தொடக்கத்திலேயே சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, அழகான ஒரு மேற்கோளுடன் தொடங்குகிறார். உன் ஆன்மா கனிந்த மாம்பழத்தை போல மாற வேண்டும். மற்றவர்களின் துன்பங்களுக்கு அதன் பிரகாசமான தங்க நிற சதை பற்றை போல மென்மையாகவும் இனிமையாகவும், உன்னுடைய சொந்த துயரங்களுக்கு அந்த பழத்தின் கொட்டையை போல கடினமாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மேற்கோள் இன்று மனித குலத்திற்கு தேவையானதை அழகாக விவரிக்கிறது என்று நான் உணர்கிறேன். மற்றவர்களின் துன்பத்தை நோக்கி மென்மை மற்றும் நம் சொந்த சிரமங்களை எதிர்கொள்வதில் உறுதி. இன்று நவீன இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் பிரம்ம வித்யா, அதாவது தியாசபி மனித குலத்திற்கு வழங்கும் தீர்வுகள் பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஆனால் இது வெறும் மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ், கவலை, ஆங்ஸைட்டி அல்லது துன்பம், சஃபரிங் பற்றிய பேச்சு மட்டும் அல்ல. இது நாம் வாழும் விதம், நாம் உருவாக்கும் சமூகம் மற்றும் மனித குலம் பயணிக்கும் திசை பற்றிய ஒரு சிந்தனை. குறிப்பாக இன்று இளைஞர்கள் குழப்பம், அழுத்தம், பாதுகாப்பற்ற உணர்வு, இன்செக்யூரிட்டி, தனிமை, ஒப்பீடு, கம்பேரிசன், உணர்ச்சிகரமான சோர்வு, இமோஷனல் எக்ஸாஸ்டன் மற்றும் பயத்தை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் எதிர்கொள்கின்றனர். எனவே நாம் கேட்பது முக்கியமாகிறது. என்ன கேள்விகள் என்றால், இது ஏன் நடக்கிறது? இன்னும் முக்கியமாக, இதற்கான தீர்வு என்ன? ஏனெனில் துன்பத்தின் வேறு காரணத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாத வரை நிரந்தரமான தீர்வு சாத்தியமில்லை. இன்று நாம் சுற்றிலும் பார்த்தால் மன அழுத்தம் வாழ்க்கையின் இயல்பான ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டது. மாணவர்கள் படிப்பு, தேர்வுகள், வேலை வாய்ப்பு மற்றும் எதிர்கால நிச்சயமற்ற தன்மை குறித்து மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். பணிபுரியும் மக்கள் தங்கள் தொழில், பதவி உயர்வுகள், நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். இன்று குழந்தைகள் கூட மிகச் சிறிய வயதிலேயே அழுத்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். நிச்சயமாக சிறிதளவு மன அழுத்தம் இயற்கையானது மற்றும் அவசியமானதே. ஒரு மாணவருக்கு தேர்வுகள் நெருங்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தம் தயாரிப்புக்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கிறது. ஆனால்
மன அழுத்தம் தற்காலிகமாக இல்லாமல் போகும்போதுதான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது. அதாவது எப்பயுமே அந்த மன அழுத்தம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் அது ஒரு பிரச்சனையா மாறுது. அது மெதுவாக மனதின் நிரந்தர நிலையாக மாறிவிடுகிறது. அப்படி நடக்கும்போது விளைவுகள் தீவிரமாகின்றன. மன அழுத்தம் மனதை மட்டுமல்ல, உடலையும் பாதிக்கிறது. இது கவலை, மனச்சோர்வு, டிப்ரெஷன், உணர்ச்சிகரமான சமநிலையின்மை, தூக்கமின்மை, இன்சாம்னியா, விரக்தி, நம்பிக்கையின்மை மற்றும் சில சமயங்களில் சுய அழிவு போக்குகளுக்கு, செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெண்டன்சிஸ் கூட வழிவகுக்கும். ஆனால் நாம் கவனமாக கவனித்தால் மிக முக்கியமான ஒன்றை நாம் கண்டறியலாம். உண்மையான போராட்டம் பெரும்பாலும் நமக்கு வெளியே இல்லை. உண்மையான போராட்டம் மனதிற்குள்ளேயே தொடங்குகிறது. ஒரு மாணவர் கவலைப்படுகிறார், நான் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? மற்றவர்கள் என்னை விட அதிக வெற்றி பெற்றால் என்ன செய்வது? சமூகம் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கும்? பணிபுரியும் நபர் கவலைப்படுகிறார், நான் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் நான் பின்தங்கி விடுவேன். மற்றவர்கள் என்னை விட வேகமாக முன்னேறினால் என் எதிர்காலத்திற்கு என்னவாகும்? மெதுவாக உணராமலேயே வாழ்க்கை ஒரு பந்தயமாக, ரேஸ் மாறுகிறது. ஒப்பீட்டின் பந்தயம். நாம் நமது சாதனைகள், தோற்றம், தொழில், செல்வம், வாழ்க்கை முறை மற்றும் மகிழ்ச்சியை கூட ஒப்பிடுகிறோம். முன்பு ஒரு நபர் தன்னை அண்டை வீட்டாரோ அல்லது உறவினர்களோடும் ஒப்பிட்டிருக்கலாம். ஆனால் இன்று சமூக ஊடகங்கள், சோசியல் மீடியா மூலம் ஒப்பீடு தொடர்ச்சியாகிவிட்டது. ஒவ்வொரு நாளும் இளம் மனங்கள் வெற்றி, ஆடம்பரம், அழகு, புகழ், உறவுகள் மற்றும் வெளித்தோற்றத்தில் சரியான வாழ்க்கை ஆகியவற்றை காட்டும் நூற்றுக்கணக்கான படங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அறியாமலேயே மனம் போதாமையை உணரத் தொடங்குகிறது. நான் போதுமான அளவு வெற்றி பெறவில்லை, நான் போதுமான அளவு கவர்ச்சியாக இல்லை, என் வாழ்க்கை போதுமான அளவு அர்த்தமுள்ளதாக இல்லை, இவ்வாறு யோசிக்கின்றனர். ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் மறந்து விடுவது என்னவென்றால், சமூக ஊடகங்கள் பெரும்பாலும் வெளித்தோற்றத்தையே காட்டுகின்றன, யதார்த்தத்தை இல்லை. புன்னகைக்கும் புகைப்படங்களுக்கு பின்னால் தனிமை இருக்கலாம், வெற்றிக்கு பின்னால் கவலை இருக்கலாம், ஆடம்பரத்திற்கு பின்னால் வெறுமை இருக்கலாம். இருப்பினும் மனம் தொடர்ந்து தன்னை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது அமைதி மெதுவாக மறைந்துவிடும். நவீன இளைஞர்கள் சுமக்கும் மிகப்பெரிய உளவியல் சுமைகளில் சைக்கலாஜிக்கல் பர்டன்ஸ் இதுவும் ஒன்று. சில சமயங்களில் பல இளைஞர்கள் இயற்கையிலேயே பலவீனமானவர்கள் அல்ல என்று நான் தனிப்பட்ட முறையில் உணர்கிறேன். அவர்கள் மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கிறார்கள், மென்டலி எக்ஸாஸ்டட். வெளியே அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள், பழகுகிறார்கள், சாதாரணமாக செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் உள்ளுக்குள் பலர் யாரும் கவனிக்காத அமைதியான பயம், குழப்பம், அழுத்தம் மற்றும் தனிமையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இளைஞர்கள் குறை கூறுவதற்கு பதிலாக அவர்களை அதிக இரக்கத்துடன் புரிந்து கொள்ள நாம் தொடங்க வேண்டும். இப்போது இயற்கையாகவே நாம் சொல்லத் தொடங்குகிறோம், படிப்பு காரணமாக நான் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன், வேலை காரணமாக நான் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன், குடும்ப பொறுப்புகள் காரணமாக நான் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் என்று. ஆனால் நாம் இன்னும் ஆழமாக சென்றால் படிப்பு, வேலை அல்லது பொறுப்புகள் எப்போதும் துன்பத்தின் உண்மையான காரணங்கள் அல்ல என்பதை கண்டறியலாம். பெரும்பாலும் ஆழமான காரணம் உளவியல் ரீதியானது. அது நமது முடிவற்ற ஆசை, ஒப்பீடு, எதிர்பார்ப்பு, பயம், பற்று, அட்டாச்மெண்ட் மற்றும் அதிருப்தி தான். ஒரு ஆசை நிறைவேறுகிறது, உடனடியாக மற்றொன்று அதன் இடத்தை பிடித்து கொள்கிறது. ஆசையின் இந்த முடிவற்ற இயக்கம் மனதை அமைதியற்றதாக, ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக வைத்திருக்கிறது. இதை மிக அற்புதமாக விளக்கும் ஒரு அழகான கதை உள்ளது. ஒருமுறை ஒரு மன்னன் தன் அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வந்து ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்தான். மன்னன் பெருமையுடன் சொன்னான், இன்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், உனக்கு தேவையானதை கேள், நான் அதை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று.
பிச்சைக்காரன் பதிலளித்தான், அப்படி ஒரு வாக்குறுதியை அளிக்கும் முன் கவனமாக யோசியுங்கள். ஆனால் மன்னன் பிடிவாதமாக இருந்தான். பிச்சைக்காரன் ஒரு கிண்ணத்தை காட்டி சொன்னான், நீங்கள் உண்மையிலேயே எனக்கு உதவ விரும்பினால் இந்த கிண்ணத்தை நிரப்புங்கள். மன்னன் சிரித்து தன் வேலைக்காரர்களை அந்த கிண்ணத்தை தங்க நாணயங்களால் நிரப்பச் சொன்னான். ஆனால் நாணயங்கள் கிண்ணத்தில் கொட்டப்பட்டவுடன் அவை மறைந்து விட்டன. மேலும் தங்கம் கொண்டு வரப்பட்டது. மீண்டும் அது மறைந்தது. கிட்டத்தட்ட முழு கருவூலமும் காலியாகும் வரை இது தொடர்ந்தது. இறுதியாக அதிர்ச்சி அடைந்த மன்னன் கேட்டான், இது என்ன வகையான கிண்ணம்? இது எந்த பொருளால் ஆனது? பிச்சைக்காரன் அமைதியாக பதிலளித்தான், இந்த கிண்ணம் மனித ஆசையால், ஹியூமன் டிசையர் ஆனது. மனித ஆசையை ஒருபோதும் உண்மையாக நிரப்ப முடியாது. நாமும் நம் வாழ்க்கையை நேர்மையாக கவனித்தால் அதே உண்மையை நாம் கண்டறியலாம். நம்மிடம் சைக்கிள் இருந்தால் மோட்டார் பைக் ஆசைப்படுகிறோம். மோட்டார் பைக் இருந்தால் கார் ஆசைப்படுகிறோம். கார் இருந்தால் சொகுசு கார் ஆசைப்படுகிறோம். பொருள் மாறுகிறது, ஆனால் அமைதியின்மை அப்படியே இருக்கிறது. நாம் ஏற்கனவே வைத்திருப்பதை அனுபவிப்பதை நிறுத்தி விடுகிறோம். ஏனெனில் மனம் இன்னும் விடுபட்டதை நோக்கி தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. நமக்கு நாமே நேர்மையாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு ஏற்கனவே இருப்பதை நாம் எவ்வளவு அடிக்கடி உண்மையாக மதிக்கிறோம். நாம் எவ்வளவு அடிக்கடி நன்றியுணர்வை, கிராட்டிடியூட் உணர்கிறோம். நாம் எவ்வளவு அடிக்கடி தற்போதைய தருணத்தில், பிரசன்ட் மொமெண்ட், அமைதியாக வாழ்கிறோம் என்று. இது மற்றொரு அர்த்தமுள்ள கதையை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. 99 கிளப், 99 கிளப் கதை. ஒருமுறை செல்வம், ஆடம்பரம் மற்றும் அதிகாரம் கொண்ட ஒரு மன்னன் இருந்தான். ஆனாலும் உங்களுக்குள் மகிழ்ச்சியற்றவனாகவே இருந்தான். ஒரு நாள் ஒரு வேலைக்காரன் வேலை செய்யும் போது மகிழ்ச்சியுடன் பாடுவதை பார்த்தான். மன்னனுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டு கேட்டான், எதுவுமே இல்லாத நிலையிலும் உன்னால் எப்படி இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிகிறது? வேலைக்காரன் பதில் அளித்தான், மன்னரே, என் குடும்பத்திற்கு உணவும் தலைக்கு மேல் கூரையும் இருக்கிறது. இதற்கு மேல் நமக்கு உண்மையிலேயே என்ன வேண்டும்? மன்னனால் இந்த மகிழ்ச்சியை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனவே அவன் தன் ஆலோசகரிடம் சென்றான். ஆலோசகர் சிரித்துவிட்டு சொன்னார், மன்னரே, ஒருவேளை அந்த வேலைக்காரன் இன்னும் 99 கிளப்பில் உறுப்பினராகவில்லை. மன்னன் கேட்டான், 99 கிளப் என்றால் என்ன? ஆலோசகர் அந்த வேலைக்காரனின் வீட்டின் வெளியே 99 தங்க நாணயங்கள் கொண்ட பையை ரகசியமாக வைக்கும்படி அவனுக்கு அறிவுறுத்தினார். அறிவுறுத்தலின்படி 99 தங்க நாணயங்கள் கொண்ட பை வேலைக்காரனின் கதவில் வைக்கப்பட்டது. வேலைக்காரன் பையை கண்டுபிடித்து மகிழ்ச்சியில் திளைத்தான். ஆனால் அந்த நாணயங்களை எண்ணிய போது ஏதோ ஒன்றை கவனித்தான். அங்கே 99 மட்டும் இருந்தன. உடனடியாக அவனது மனம் அமைதியற்றது ஆனது. ஒரு நாணயம் குறைவு. நிச்சயமாக யாரும் 99 நாணயங்களை மட்டும் பையில் வைக்க மாட்டார்கள். அந்த தருணத்திலிருந்து அவனது அமைதி மறைந்து விட்டது. 100வது நாணயத்தை பெற அவன் இடைவிடாத உழைத்தை தொடங்கினான். அவன் பாடுவதை நிறுத்தினான். வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதை நிறுத்தினான். அவனை கண்டு மன்னன் ஆச்சரியம் அடைந்து தன் ஆலோசகரிடம் கேட்டான். அதற்கு அவர் பதிலளித்தார், மன்னரே, அவன் இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக 99 கிளப்பில் உறுப்பினராகிவிட்டான். ஆலோசகர் விளக்கினார், 99 கிளப் என்பது மகிழ்ச்சியாக வாழ போதுமான அளவு இருந்தும் எப்போதும் இன்னும் ஒன்றை விரட்டி கொண்டிருப்பதால் திருப்தி அடையாத மக்களை குறிக்கிறது. இந்த கதை நவீன மனித குலத்தை பற்றி மிக ஆழமான ஒன்றை காட்டுகிறது. பிரச்சனை பொருட்களின் பற்றாக்குறை மட்டுமல்ல, ஆழமான பிரச்சனை உள் அதிருப்தி, இன்னர் டிசாட்டிஸ்பாக்சன். தற்போதைய தருணத்தில் வாழ நாம் மறந்துவிட்டோம். லைட் ஆன் தி பாத் நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது, அம்பித்ததை ஒழி, கில் அவுட் ஆம்பிஷன். மீண்டும் வசதிக்கான ஆசையை ஒழி. வசதியே தவறு என்று இது அர்த்தமல்ல.
ஆசை முடிவற்றதாகி மனதை கட்டுப்படுத்த தொடங்கும் போதுதான் உண்மையான ஆபத்து தொடங்குகிறது. ஏனெனில் அப்போது மகிழ்ச்சி எப்போதும் எதிர்காலத்திலேயே இருக்கும். எதிர்காலத்தை துரத்தும் மனம் ஒருபோதும் நிகழ்காலத்தில் அமைதியாக இருக்க முடியாது. நன்றி. Thank you so much, Abhinav, for that. I just want to say something in Tamil. Romba nalu sonna anna. I hope that message translates well. And इसी के साथ हम अपने अगले वक्ता के पास चलते हैं, जो अब ये हिंदी में आगे लेके चलेगी आज का सेशन। कृतिका गोयल, जो 2017 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। वो प्रयास थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल लॉज गाजियाबाद की मेंबर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बहुत सारे यूथ कैंप्स में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, बट उन्हें ऑर्गेनाइज भी किया है। उन्होंने यंगर मेंबर्स वाले मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी हैं, एंड जो काम मैं आज कर रहा हूँ मॉडरेशन, वो पहले उसमें एक्सपर्ट रह चुकी हैं। तो बट आज उन्हें ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने थॉट्स सबके साथ शेयर करें। सो कृतिका, आप अब शुरू कर सकते हैं। Thank you, Kaustubh. And first of all, thank you so much, स्मिता दीदी। नमस्ते सभी को। मैं कोशिश करूंगी कि स्मिता दीदी ने जो इतनी गहन बात बोली, मैं उसको सरल हिंदी में आप सबको समझाने की या बताने की कोशिश कर सकूं। सबसे पहले तो दीदी ने जो पूरे आज के मीटिंग की शुरुआत करी, एक बहुत ही सुंदर और सिंपल एग्जाम्पल दिया कि हमारी आत्मा एक आम, जो कि यूजुअली सबको पसंद होता है, आम के फल जैसी होनी चाहिए। कैसे आम की गुठली इतनी मजबूत होती है और कठोर होती है, और वहीं उसका जो गूदा होता है, जो हम सब बहुत चाव से खाते हैं, वो एकदम नर्म, सुंदर, मुलायम होता है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई भी दुख आए, तो हमें अपने दुखों का सामना उसी आम की गुठली जितना मजबूत रहकर करना चाहिए और कठोरता से उनका सामना करना चाहिए। और जब बात दूसरों के दुखों की हो, तो हमें आम के मीठे और सुनहरे गूदे जितनी नरम और मीठी अप्रोच रखनी चाहिए और सौम्यता से दूसरों को समझाना चाहिए, और हो सके तो उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। तो अब हम आधुनिक युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों के लिए थियोसॉफी द्वारा दिए जाने वाले समाधानों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये विषय का चर्चा सिर्फ तनाव या एंजाइटी या दुख के बारे में नहीं है। यह इस बात पर सोचने की कोशिश है कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, हम कैसा माहौल बना रहे हैं अपने आसपास दूसरों के लिए और खुद के लिए, खासकर आज के समय में जहां हम जैसे लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल में, कंफ्यूजन में रहते हैं, पूरे टाइम प्रेशराइज महसूस करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कंपैरिजन, मानसिक तनाव और डर का सामना अक्सर करते रहते हैं। शायद पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को इन सब चीजों का सामना करना ही नहीं पड़ा, और इसीलिए हमारा यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि जब तक हम सफरिंग का या हमारे दुखों का असली कारण नहीं समझेंगे, तब तक कोई ऐसा हल नहीं मिल सकता जो लंबे समय तक काम कर सके। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो स्ट्रेस या तनाव लगभग हर जिंदगी का एक आम सा हिस्सा बन चुका है। बच्चों को पढ़ाई का, एग्जाम्स का, प्लेसमेंट्स का, और यहाँ तक कि कल क्या होने वाला है, क्या मैंने जैसा सोचा है वैसा होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, इन्हीं सब चीजों को लेकर स्ट्रेस रहता है। कामकाजी लोगों को, यानी वर्किंग लोगों को करियर का, प्रमोशन का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, और यहाँ तक कि समाज की एक्सपेक्टेशंस का भी स्ट्रेस रहता है। और तो और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे
जिन्होंने अभी दुनिया देखना शुरू भी नहीं किया है, इतनी कम उम्र में वो भी प्रेशराइज महसूस करने लग गए हैं। अब निश्चित रूप से देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेस होना स्वाभाविक है और कई बार जरूरी भी है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से पहले थोड़ा प्रेशर या थोड़ी घबराहट उन्हें तैयारी करने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए मदद करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस कुछ समय के लिए रहने वाली चीज रहने की बजाय धीरे धीरे हमारे दिमाग की परमानेंट कंडीशन बन जाता है। तनाव सिर्फ हमारे दिमाग पर ही असर नहीं करता, बल्कि हमारे पूरे शरीर पर धीरे धीरे असर करने लगता है। इससे एंजाइटी डेवलप होती है, डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस, ढंग से नींद नहीं आती, भूख कम लगने लगती है या कुछ लोगों को ज्यादा लगने लगती है। इंसान चिड़चिड़ा रहने लगता है। काम करने से पहले ही सोच लेना कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा या मैं तो फेल हो जाऊंगा। ऐसे ख्याल और कभी कभी तो कुछ लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी टेंडेंसीज भी डेवलप होती हैं। कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी और असली लड़ाई हमारे खुद के अपने मन से होती है, ना कि बाहर के लोगों से। एक स्टूडेंट सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर दूसरे लोग मुझसे ज्यादा आगे निकल गए तो, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वहीं एक वर्किंग पर्सन सोचता है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ और पीछे रह गया तो, अगर दूसरे लोग मुझसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए तो मेरे आने वाले कल का क्या होगा। और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी एक दौड़ बन जाती है, कंपैरिजन की रेस। हम अपनी अचीवमेंट्स, हम कैसे दिखते हैं, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारा करियर, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, अपना लाइफस्टाइल, और यहाँ तक कि हम कितने खुश हैं और कितने दुखी, ये भी हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। पहले शायद कोई व्यक्ति सिर्फ अपने पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से अपनी तुलना करता था, लेकिन आज थैंक्स टू सोशल मीडिया कि वो सोशल मीडिया की वजह से लगातार तुलना करता ही रहता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ना जाने कितनी तस्वीरें या कितनी रील्स यंग लोग, आजकल तो बड़े लोग भी देखने लगते हैं, जो असल जिंदगी से बिल्कुल विपरीत होती है। उन रीलों में और तस्वीरों में जिंदगी इतनी परफेक्ट दिखती है। लोग, उनका काम करने का तरीका, किसी की खूबसूरती, किसी का फिगर, किसी का बैंक बैलेंस, किसी का शानदार घर, किसी का पति या किसी की पत्नी, सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है कि धीरे धीरे बिना हमें पता चले हमारा दिमाग खुद को कम तोलने लगता है, खुद को कम आंकने लगता है। कोई सोचने लगता है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, कोई सोचने लगता है कि मैं कम सुंदर हूँ, और कोई ये सोचता है कि मेरी जिंदगी मीनिंगफुल ही नहीं है। अब दिक्कत ये है कि जिस सोशल मीडिया ने हमारा दिमाग हैक कर लिया है, जिस फोटो को देखकर हम खुद को कम समझने लग गए हैं, हो सकता है कि उस एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के पीछे बहुत सारा अकेलापन हो, सक्सेस के पीछे एंजाइटी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों और लग्जरी के पीछे खालीपन हो। फिर भी जब हमारा मन लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, तो हमारी पीस यानी हमारी शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और शायद आज के युवाओं के ऊपर सबसे बड़े साइकोलॉजिकल बर्डन्स में से एक यही है। शायद आज के कुछ युवा नेचर से कमजोर नहीं है, वो बस मानसिक रूप से थक गए हैं। बाहर से वो लोग मुस्कुराएंगे, लोगों से मिलेंगे नॉर्मली एकदम, अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अंदर से बहुत से युवा ऐसे साइलेंट फियर, कंफ्यूजन, तनाव और शायद अकेलेपन को महसूस करते हैं, जिसे कोई न देख पाता है न महसूस कर पाता है। और इसीलिए शायद हम युवाओं के अंदर नुक्स या कमियां निकालने के बजाय उन्हें ज्यादा करुणा के साथ समझना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद आपकी खाली एक मुस्कान उनका दिन बना दे। अब नेचुरली हम कहते हैं, मैं पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ, मैं काम की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ, मैं परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ,
लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो शायद हमें पता चले कि पढ़ाई, काम या जिम्मेदारियां हमेशा हमारे दुखों का असली कारण नहीं होता, बल्कि बहुत बार इसका कारण हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, खुद को दूसरों से तोलना, एक्सपेक्टेशंस, डर, अटैचमेंट या तसल्ली ना होना होता है। एक इच्छा पूरी होती है और तुरंत दूसरी इच्छा जाग जाती है, और इच्छाओं की ये एंडलेस मूवमेंट हमारे दिमाग में शांति रहने ही नहीं देती। एक बहुत सुंदर कहानी है जो शायद इस बात को और बेहतर समझाए। एक बार एक राजा अपने महल के बाहर निकला और उसने एक भिखारी को देखा। राजा ने बड़े गर्व से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भिखारी ने कहा, ऐसा वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। तब भिखारी ने उसे एक कटोरा दिखाया और कहा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो एक बार इस कटोरे को भर दीजिए। राजा हंसा और अपने नौकरों को आदेश दिया कि कटोरे को सोने के सिक्कों से भर दो। लेकिन जैसे ही सिक्के कटोरे में डाले वो गायब हो गए। अब और सोना मंगाया गया, वो भी गायब हो गए, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक राजा का लगभग पूरा खजाना खाली ना हो गया। आखिर में हैरान होकर राजा ने पूछा, ये कैसा कटोरा है, ये किस चीज से बना है? भिखारी ने शांति से जवाब दिया, ये कटोरा इंसान की इच्छाओं से बना है, और इंसान की इच्छाएं कभी सच में पूरी नहीं हो सकती। और शायद अगर हम ऑनेस्टली अपनी जिंदगी को देखें तो हमें यही बात अपने जीवन में भी दिखाई देगी। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो लग्जरी गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए। चीज बदलती रहती है लेकिन बेचैनी वही रहती है, और धीरे धीरे हम उस चीज का आनंद लेना भी बंद कर देते हैं जो हमारे पास पहले से है, क्योंकि हमारा दिमाग तो लगातार उस चीज की तरफ भाग रहा है जो अभी हमारे पास नहीं है। हम कितनी बार सोचते हैं कि उन चीजों की वैल्यू हम शायद नहीं समझते जो हमारे पास पहले से है। कितनी बार हम एक्चुअली ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, हम कितनी बार प्रेजेंट मोमेंट में शांति से जीते हैं। स्मिता दीदी ने एक और मीनिंगफुल स्टोरी बताई, 99 क्लब की कहानी। एक बार एक राजा था जिसके पास बहुत सारी लग्जरी, वेल्थ, आर्मरी, पावर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने एक सेवक को खुशी खुशी काम करते हुए देखा, वो भी गाना गाते हुए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुम इतनी कम चीजें होने के बावजूद इतने खुश कैसे रह सकते हो? तो सेवक ने जवाब दिया, महाराज, मेरे परिवार के पास खाने के लिए खाना है और सोने के लिए सर, और सर पे छत। हमें सच में और क्या चाहिए? राजा इस खुशी को समझ नहीं पाया, इसलिए वो अपने सलाहकार के पास गया। सलाहकार मुस्कुराया और बोला, महाराज, शायद यह सेवक अभी तक 99 क्लब का सदस्य नहीं बना है। राजा ने पूछा, 99 क्लब क्या है? तो सलाहकार ने उसे कहा कि वो चुपचाप उस सेवक के घर के बाहर 99 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग रखवा दे। सलाहकार ने कहने के अनुसार सेवक के घर के बाहर 99 सोनों के सिक्कों से भरा एक बैग रख दिया गया। सेवक बाहर निकला घर से, उसने बैग देखा और वो बहुत खुश हो गया। लेकिन जब उसने सिक्के गिने तो उसे एक बात समझ में आई, सिक्के सिर्फ 99 थे। तुरंत उसका मन परेशान हुआ, एक सिक्का गायब है। उसने सोचा, कोई भी 99 सिक्कों का बैग मुझे क्यों देगा? उस पल से वो एकदम परेशान और अशांत हो गया। अब वह उस 100वें सिक्के को पाने के लिए लगातार काम करने लगा। उसने गाना बंद कर दिया, उसने जिंदगी जीना बंद कर दिया, खुश रहना बंद कर दिया। राजा ने अब उसे देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने अपने सलाहकार से पूछा,
तो सलाहकार ने जवाब दिया, महाराज अब ये ऑफिशियली 99 क्लब का सदस्य बन चुका है। फिर सलाहकार ने समझाया, 99 क्लब में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुश रहने के लिए पर्याप्त चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी सैटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा उस एक और चीज के पीछे भागते रहते हैं। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि हमारे पास चीजें कम है या फैसिलिटीज कम है। असल समस्या हमारे अंदर का असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन है। हम आज में, इस पल में, अभी में जीना भूल गए हैं। ऐसे तो हम अकेलापन महसूस करते रहते हैं, और जब कोई दोस्त या रिश्तेदार मिलने आएगा तो हम उसके साथ बैठ के बात करने के बजाय फोन में लगे रहेंगे। ये हमारी जिंदगी का एक आम पैटर्न बन चुका है। लाइट ऑन द पाथ में लिखा है, किल आउट एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करो। और फिर कहा गया है, किल आउट डिजायर फॉर कंफर्ट, यानी सुख सुविधाओं की इच्छा को खत्म करो। इसका मतलब यह नहीं है कि कंफर्ट खुद में गलत है। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारी इच्छाएं एंडलेस हो जाती हैं और वो हमारे मन को काबू करने लगती हैं। और ऐसे में हमारी खुशी हमेशा आने वाले कल में ही हम सोचते रहते हैं, और जो आज है, जो अभी इस पल में है, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। और जो मन हमेशा आने वाले कल के पीछे भाग रहा है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। थैंक यू। थैंक यू सो मच कृतिका, इतने सरल भाषा में हम सबको इतना डीप टॉपिक समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We move on to our first speaker again, Smita. Over to you. You may continue in English now. Thank you. Let's continue. Interestingly, the same truth appears in many spiritual traditions. Buddhism teaches through the Four Noble Truths that suffering exists and that one of the major causes of suffering is desire and attachment. Similarly, according to the Yoga Sutras of Patanjali, ignorance, avidya, is considered the fundamental cause of suffering. From avidya arises egoism, attachment, aversion, and the deep tendencies that bind human beings to conflict and sorrow. This ignorance does not merely mean absence of intellectual knowledge. One may possess education, information, and intellectual brilliance and yet remain deeply ignorant in the spiritual sense. True ignorance is the failure to perceive the unity of life. When human beings forget their deeper nature, ego slowly takes control. And once ego dominates the mind, separation begins. We divide ourselves into religions, castes, nations, languages, political groups, and social identities. We begin thinking in terms of us and them. And from this sense of separation arise conflict, hatred, insecurity, competition, violence, and fear. Humanity suffers because it has forgotten its essential unity. Perhaps if we observe carefully, we can see how the same psychological restlessness that creates suffering within an individual also begins shaping society itself. I repeat, perhaps if we observe carefully, we can see how the same psychological restlessness that creates suffering within an individual also begins shaping the society itself. That means our anxiety, our sense of separateness, our competition, our comparison, that shapes the society. An inwardly disturbed mind
gradually creates an outwardly disturbed world. Today, we must carefully observe the kind of individuals society is creating. In a class of 50 children, suppose, in a class of 50 children, they also have a group. Can you imagine? Because they have seen from the childhood that we have created groups, religious groups, political groups. So they also have groups in the school. Rich kids have one group, toppers have one group, religious groups. What are they learning from us, from their elders, from the older generation? And we blame them and complain that this new generation, the youth, the new generation, children, are intolerant. They cannot tolerate even the smallest thing. I mean, we do things, we shape the society, we taught them, whatever we are doing, they are learning from us, and we blame them. Nice. Through social media, news channels, and public discourse, impressions are constantly being planted into the minds and hearts of people, especially the youth. The way events are portrayed, the narratives that are repeated, and the emotions that are stimulated profoundly influence collective consequences. Thanks to the social media, news channels, how they exaggerate things. I mean, the religious conflicts, whatever happens, they blame a particular group of community. Something happens to someone, something happens in the society, some riots happen, and then the news channels, the social media, they try to blame a particular group of people, a particular community. So we often believe that we are free to say or do whatever we like. Yeah, obviously, we are free to do or say whatever we want without realizing the long-term consequences of our actions. Every thought, every word, every attitude contributes to shaping future generations. The values we normalized today become the psychological environment in which tomorrow's youth will grow. In many ways, we are creating future generations in our own image. I repeat, we are creating our future generations in our own image. Therefore, the responsibility before humanity is immense. If we continue to nurture division, fear, hatred, and separative thinking, the same tendencies will multiply in society. But if we cultivate understanding, compassion, unity, and brotherhood, we can help create a more harmonious world. And perhaps this is why humanity today possesses extraordinary technological advancement, yet still struggles to find peace. Theosophy offers a profoundly different vision. The way foundation of the Theosophical Society is, the very foundation of the Theosophical Society is universal brotherhood, not brotherhood, not just brotherhood. Not just brotherhood based upon religion, nationality, caste, or race, but brotherhood based upon the unity of life itself, universal brotherhood. Theosophy reminds us that humanity is deeply interconnected, and when this understanding awakens, selfishness slowly begins transforming into compassion. A spiritually immature mind constantly asks, what can I gain? But a spiritually mature mind slowly begins asking, how can I help? I repeat, a spiritually immature mind constantly asks, what can I gain? But a spiritually mature mind slowly begins asking, how can I help? And perhaps
one of the deepest crises faced by modern youth today is not merely stress, it is identity, the identity crisis. Many young people silently ask themselves, who am I? What is the purpose of my life? Why do I still feel empty even after achievement? Modern society gives enormous amounts of information but very little wisdom. We are taught how to compete but rarely how to understand ourselves. We are taught how to earn money but rarely how to live peacefully. And therefore, many young people achieve external success while inwardly feeling lost. Now, when we examine modern education honestly, we can clearly observe this imbalance. Children grow up surrounded by comparison, competition, pressure, and expectation. In schools, children who score higher marks are praised, but children with different talents, music, creativity, kindness, poetry, compassion, and art, are often neglected. If a child scores 99 out of 100, many parents immediately ask, where did the remaining 1 mark go? Instead of appreciating the 99, attention becomes fixed upon the missing one. And slowly, children begin feeling that love and acceptance depend upon achievement. How this thought came into their mind that acceptance depends on achievements. Because they see us, how we behave, how we react. This creates tremendous psychological pressure. Then later, when youth experience depression, stress, or emotional breakdown, society blames them. But perhaps we should honestly ask, who created this pressure? People often say youth today are careless. But I remember one thing that I was very young, around 17 years old, and I came to Theosophy. I started attending meetings and getting attracted to Theosophy. And I attended a session by Sister Suglina, where she was addressing the whole group of young people. And I was there, and so many young members were there. So I would say that I was very inspired by her talk. And frankly speaking, when I heard her talk and how she was addressing the youth, and something inside me just changed, and I was so happy, and I can't express the feeling, but by her talk and uh, and I was more attracted to her personality, how she was um expressing her things and how she was understanding the youth, and so the way she was talking, and then she told then she was one thing that attracted me the most, and I remember still. So youth are not careless, she said. Youth are not careless, they are caredless. And that thing was, that imprinted inside my mind from that day. When I was 17, I was I was very young and I was very new to Theosophy. So I wanted to tell this thing in front of everyone today. So children observe the world around them. They learn division from society itself. They observe religious conflict, political hatred, social comparison, and material obsession. And naturally, these patterns become part of their own thinking. Even social media reinforces these tendencies continuously. Young minds are
constantly influenced by superficial standards regarding beauty, success, popularity, and lifestyle. And therefore, instead of merely criticizing society, we must understand the deeper roots of the crisis. Annie Besant once emphasized that the purpose of the education is not merely to prepare a child to earn a livelihood, but to build character and awaken the deeper dimensions of human life. And perhaps that is exactly what humanity urgently needs today. Not merely educated minds, but awakened hearts. There is another beautiful story that explains this wonderfully. Once there was a teacher. People from nearby villages visited the teacher to seek advice for their problems. The teacher and his students used to listen, ponder, and offer solutions the best they could. One of the students who participated in many of these discussions became impatient. These people are so ignorant, he used to say, shaking his head and crying out with frustration. There is so much ignorance in the world. His teacher noticed this. He advised his student against his behavior of looking down on other people, but in vain. One day, the student and the teacher were on their daily stroll. They came across a large hall and went in. It was evening and the hall was dark inside. There is so much darkness in here, said the teacher. Yes, there is. The student agreed. Oh, there is so much darkness in here. The teacher repeated it, frustration in his voice. The student was confused. He looked at his teacher and repeated, yes, teacher. Indeed, there is much darkness. But the teacher continued to complain. So much darkness. So much darkness. The student became irritated and finally said, teacher, shouting about darkness will not remove it. We need a lamp. The teacher smiled and replied, the same is true for ignorance. Complaining alone cannot remove it. We must bring light, light of wisdom. And perhaps this is one of the greatest messages of Theosophy. Transformation does not happen through criticism alone. It happens through awareness, through wisdom, through compassion, through inner awakening. So naturally the question arises, how can humanity move towards such transformation? Theosophy emphasizes these three very important practices. Everybody knows in every meetings, everywhere, wherever you listen to anyone, these three things will be there. SMS, study, meditation, and selfless service. But these values cannot suddenly be imposed upon society. The seeds must be planted gradually, especially during childhood. Earlier, parents and grandparents often narrated meaningful stories to children, stories filled with kindness, courage, wisdom, and moral beauties. These stories quietly shaped character. I remember whenever I used to go to my grandparents' home, every evening, we all cousins and some friends of mine, we all, my grandfather, he used to sit on the veranda every evening. So we used to run, and when I see grandfather is sitting there, and I call everyone, the cousins and everyone, and then we surround him, and then we used to ask him, tell some story, and then he used to tell some stories about moral and kindness. So I remember this thing. Similarly, compassion must also become a living experience. For example, instead of only celebrating birthdays through expensive gifts and parties, children can also be encouraged to share with orphanages, homes for the needy,
or suffering communities. When compassion becomes experience rather than theory, the heart slowly begins to transform. The transformation always happens slowly. Awareness grows slowly. Meditation grows slowly. Compassion grows slowly. But as awareness deepens, desires gradually lose their domination over the mind. Then comparison begins disappearing, inner conflict reduces, and slowly peace emerges. Meditation becomes especially important today because modern life has filled the human mind with constant stimulation, noise everywhere, information everywhere, distraction also everywhere, but very little silence. And without silence, self understanding becomes difficult. Meditation is not merely closing the eyes for a few minutes, it is learning to observe oneself deeply, to understand one's thoughts, fears, reactions, desires, and emotions without condemnation. And through such awareness, transformation begins naturally. J. Krishnamurti once said, while expressing your desires, you must exercise control in order to prevent them from causing harm to yourself or to others. I repeat, while expressing your desires, you must exercise control in order to prevent them from causing harm to yourself or to others. Because Theosophy does not teach separation. This understanding is extremely important. Theosophy does not teach separation, it teaches awareness. It does not ask humanity to blindly believe, it asks humanity to awaken, to inquire, to observe, to understand life deeply. And perhaps that is what modern youth truly need today. Not merely more information, but wisdom. Not merely achievement, but meaning. Not merely success, but inner peace. So I would like to conclude with this thought. Stress itself is not entirely harmful. A certain amount of pressure can motivate us towards sincere effort and responsibility. But when stress becomes fear, comparison, greed, insecurity, or endless desire, it destroys peace. Therefore, the real solution lies not merely in changing outer circumstances, but in understanding ourselves deeply. We must rediscover contentment. We must rediscover compassion. We must rediscover the unity of life. Theosophy has given humanity profound wisdom, but wisdom becomes meaningful only when it is lived in daily life. I repeat, Theosophy has given humanity profound wisdom, but wisdom becomes meaningful only when it is lived in daily life. And if we can truly practice these teachings, then perhaps we can create not only peaceful individuals, but also a more peaceful humanity. I would like to end with a simple thought. If there is darkness in the world, let us become a lamp. If there is hatred, let us bring compassion. If there is confusion, let us bring understanding. And if there is suffering, let us become instruments of peace. Thank you. Thank you so much, Smita. This was amazing, and I cannot wait to look forward to the discussion that we have with the broader audience towards the end. Thank you so much for reminding everyone about SMS in the age of WhatsApp. So with that, I would move on to our Tamil speaker, Abhinav. Over to you, Abhinav. சுவாரஸ்யமாக அதே உண்மை பல ஆன்மீக மரபுகளில் தோன்றுகிறது. புத்த மதம் 4 உயரிய உண்மைகள் 4 நோபல் ட்ரூத்ஸ் மூலம் துன்பம் இருப்பதாகவும், துன்பத்திற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று ஆசை மற்றும் பற்று அட்டாச்மெண்ட் என்றும் கற்பிக்கிறது. அதேபோல் பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரங்களின்படி அறியாமை அவித்யா துன்பத்தின் அடிப்படை காரணமாக கருதப்படுகிறது. அவித்யாவிலிருந்து அகங்காரம் ஈகோயிசம், பற்று
வெறுப்பு மற்றும் மனிதர்களை மோதல் மற்றும் துயரத்தில் பிணைக்கும் ஆழமான போக்குகள் எழுகின்றன. இந்த அறியாமை என்பது அறிவுசார் அறிவின் இன்டெலெக்சுவல் நாலேஜ் பற்றாக்குறை என்று மட்டும் அர்த்தமல்ல. ஒருவர் கல்வி, தகவல் மற்றும் அறிவுசார் மேதமை பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக ஆழமான அறியாமையில் இருக்கலாம். உண்மையான அறியாமை என்பது வாழ்வின் ஒன்றிணைப்பை, அதாவது யூனிட்டி ஆஃப் லைஃப், அதை உணரும் திறன் இல்லாமை ஆகும். மனிதர்கள் தங்கள் ஆழமான தன்மையை மறக்கும் போது அகங்காரம் மெதுவாக கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக் கொள்கிறது. அகங்காரம் மனதை ஆளத் தொடங்கியதும் பிரிவினை தொடங்குகிறது. நாம் நம்மை மதங்கள், சாதிகள், நாடுகள், மொழிகள், அரசியல் குழுக்கள் மற்றும் சமூக அடையாளங்களாக பிரிக்கிறோம். நாம் நாங்கள் மற்றும் அவர்கள் என்ற அடிப்படையில் சிந்திக்க தொடங்குகிறோம். இந்த பிரிவினை உணர்விலிருந்து மோதல், வெறுப்பு, பாதுகாப்பற்ற உணர்வு, போட்டி, வன்முறை மற்றும் பயம் எழுகின்றன. மனிதகுலம் அதன் அத்தியாவசிய ஒற்றுமையை மறந்து விட்டதால் துன்பப்படுகிறது. நாம் கவனமாக கவனித்தால் ஒரு தனி மனிதருக்குள் துன்பத்தை உருவாக்கும் அதே உளவியல் அமைதியின்மை சமூகத்தையே வடிவமைக்க தொடங்குவதை பார்க்க முடியும். உள் மனதில் அமைதியற்ற ஒரு மனம் மெதுவாக வெளியுலகை அமைதியற்றதாக மாற்றுகிறது. இன்று தனி நபர் சமூகம் எந்த வகையான மனிதர்களை உருவாக்குகிறது என்பதை நாம் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். 50 குழந்தைகள் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே குழுக்கள் பிரிவதை, அதாவது மத குழுக்கள் மற்றும் அரசியல் குழுக்கள் பார்த்திருப்பதால் அவர்களும் குழுக்களாக செயல்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அதனால் பள்ளியிலும் அவர்களுக்கு குழுக்கள் உள்ளன. பணக்கார குழந்தைகள் ஒரு குழு, முதலிடம் பிடிப்பவர்கள் ஒரு குழு, மத குழுக்கள். இவ்வாறு அவர்கள் நிம்மடம் இருந்து, பெரியவர்களிடமிருந்து, பழைய தலைமுறையிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? பிறகு நாம் அவர்களை குற்றம் சாட்டுகிறோம். இந்த புதிய தலைமுறை இளைஞர்கள் அல்லது புதிய தலைமுறை குழந்தைகள் சகிப்பு தன்மையற்றவர்கள் என்று புகார் செய்கிறோம். அவர்களால் மிகச் சிறிய விஷயங்களை கூட சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. சமூக ஊடகங்கள், செய்தி சேனல்கள் மற்றும் பொது உரையாடல்கள் மூலம் மக்களின் மனதில், குறிப்பாக இளைஞர்களின் மனதில் பதிவுகள் தொடர்ந்து பதியப்படுகின்றன. நிகழ்வுகள் சித்தரிக்கப்படும் விதம், மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படும் கதைகள் மற்றும் தூண்டப்படும் உணர்ச்சிகள் கூட்டு நினைவு, அதாவது கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் ஆழமாக பாதிக்கின்றன. நாம் விரும்பியதை சொல்லவோ அல்லது செய்யவோ நமக்கு சுதந்திரம் இருப்பதாக நாம் அடிக்கடி நம்புகிறோம். ஆனால் நம் செயல்களின் நீண்ட கால விளைவுகளை உணர்வதில்லை. ஒவ்வொரு எண்ணமும், ஒவ்வொரு வார்த்தையும், ஒவ்வொரு மனப்பான்மையும் எதிர்கால தலைமுறைகளை வடிவமைக்க பங்களிக்கிறது. இன்று நாம் இயல்பாக்கும் மதிப்புகள் நாளைய இளைஞர்கள் வளரும் உளவியல் சூழலாக மாறுகின்றன. பல வழிகளில் நாம் எதிர்கால தலைமுறைகளை நமது பிம்பத்திலேயே உருவாக்குகிறோம். எனவே மனித குலத்தின் முன் உள்ள பொறுப்பு மிகப்பெரியது. நாம் பிரிவினை, பயம், வெறுப்பு மற்றும் பிரிவினைவாத சிந்தனையை வளர்ப்பதை தொடர்ந்தால் அதே போக்குகள் சமூகத்தில் பெருகும். ஆனால் நாம் புரிதல், இரக்கம், ஒற்றுமை மற்றும் சகோதரத்துவத்தை வளர்த்தால் மிகவும் இணக்கமான உலகத்தை உருவாக்க உதவ முடியும். இதனால் தான் மனிதகுலம் இன்று அசாதாரணமான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை கொண்டிருந்தாலும் அமைதியை கண்டறிய போராடுகிறது. பிரம்ம வித்யா, அதாவது தியோசபி, மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது. பிரம்ம வித்யா சபையின் அடித்தளமே உலகளாவிய சகோதரத்துவம், யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட். மதம், தேசியம், சாதி அல்லது இனத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, மாறாக
வாழ்வின் ஒற்றுமையின் அடிப்படையிலான சகோதரத்துவம், மனிதகுலம் ஆழமாக ஒன்றொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பிரம்ம வித்யா நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த புரிதல் விழிக்கும் போது சுயநலம் மெதுவாக இரக்கமாக மாறத் தொடங்குகிறது. ஆன்மீக ரீதியாக முதிர்ச்சி அடையாத மனம் தொடர்ந்து கேட்கிறது, நான் என்ன லாபம் பெற முடியும்? ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக முதிர்ந்த மனம் மெதுவாக கேட்கத் தொடங்குகிறது, நான் எப்படி உதவ முடியும் என்று. நவீன இளைஞர்கள் இன்று எதிர்கொள்ளும் ஆழமான நெருக்கடிகளில் ஒன்று வெறும் மன அழுத்தம் மட்டுமல்ல, அது அடையாளம், ஐடென்டிட்டி. பல இளைஞர்கள் தங்களுக்குள் மௌனமாக கேட்டுக்கொள்கிறார்கள், நான் யார்? என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? சாதனைக்கும் பிறகும் நான் ஏன் இன்னும் வெறுமையை உணர்கிறேன் என்று. நவீன சமூகம் அதிகப்படியான தகவல்களை வழங்குகிறது, ஆனால் மிக குறைந்த ஞானத்தையே, விஸ்டம் வழங்குகிறது. போட்டியிட நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது, ஆனால் நம்மை நாமே புரிந்து கொள்ள கற்றுக் கொடுக்கப்படுவதில்லை. பணம் சம்பாதிக்க நமக்கும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது, ஆனால் அமைதியாக வாழ கற்றுக் கொடுக்கப்படுவதில்லை. அதனால் தான் பல இளைஞர்கள் வெளிப்புற வெற்றியை அடையும் போது உள்ளுக்குள் தொலைந்து போனதாக உணர்கிறார்கள். இப்போது நாம் நவீன கல்வியை நேர்மையாக ஆய்வு செய்தால் இந்த சமநிலையின்மையை தெளிவாக காணலாம். ஒப்பீடு, போட்டி, அழுத்தம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டு குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள். பள்ளிகளில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் குழந்தைகள் பாராட்டப்படுகிறார்கள், ஆனால் இசை, படைப்பாற்றல், கருணை, கவிதை, இரக்கம் மற்றும் கலை போன்ற வெவ்வேறு திறமைகள் கொண்ட குழந்தைகள் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். ஒரு குழந்தை 100க்கு 99 மதிப்பெண் எடுத்தால் பல பெற்றோர்கள் உடனடியாக கேட்கிறார்கள், மீதமுள்ள ஒரு மதிப்பெண் எங்கே போனது என்று. 99ஐ பாராட்டுவதற்கு பதிலாக கவனமானது விடுபட்ட அந்த ஒன்றின் மீது நிலை பெறுகிறது. மெதுவாக குழந்தைகள் அன்பு மற்றும் ஏற்பு ஆகியவை சாதனையை சார்ந்தவை என்று உணரத் தொடங்குகிறார்கள். இது மிகப்பெரிய உளவியல் அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. பிறகு இளைஞர்கள் மனச்சோர்வு, மன அழுத்தம் அல்லது உணர்ச்சிகரமான சரிவை, இமோஷனல் பிரேக் டவுன் அனுபவிக்கும் போது சமூகம் அவர்களை குற்றம் சாட்டுகிறது. ஆனால் நாம் நேர்மையாக கேட்க வேண்டும், இந்த அழுத்தத்தை உருவாக்கியது யார் என்று. மக்கள் அடிக்கடி சொல்கிறார்கள், இன்றைய இளைஞர்கள் கவனக்குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் எனக்கு ஒன்று நினைவிருக்கிறது. நான் சுமார் 17 அல்லது 18 வயதுடையவளாக இருந்த போது, அதாவது ஸ்மிதாதி சகோதரி சுவ்ரலீனா நடத்திய ஒரு அமர்வில் கலந்து கொண்டேன். அங்கு அவர் இளைஞர்களிடையே பேசிக் கொண்டிருந்தார். நான் பிரம்ம வித்யாவிற்கு மிகவும் புதியவள். அவரது பேச்சினாலும் அதைவிட அவரது ஆளுமையினாலும் இளைஞர்களிடம் அவர் பேசிய விதத்தினாலும் நான் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டேன் என்று சொல்வேன். ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நான் ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. இளைஞர்கள் கவனக்குறைவானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் குறைவாகவே கவனிக்கப்படுகிறார்கள். யூத் ஆர் நாட் கேர்லெஸ், தே ஆர் கேர்லெஸ். குழந்தைகள் தங்கள் உலகத்தை உள்வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். சமூகத்திலிருந்தே அவர்கள் பிரிவினையை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் மத மோதல், அரசியல் வெறுப்பு, சமூக ஒப்பீடு மற்றும் பொருள் வெறியை கவனிக்கிறார்கள். இயற்கையாகவே இந்த வடிவங்கள் அவர்களின் சொந்த சிந்தனையின் ஒரு பகுதியாக மாறுகின்றன. சமூக ஊடகங்கள் கூட இந்த போக்குகளை தொடர்ந்து வலுப்படுத்துகின்றன. இளம் மனங்கள் அழகு, வெற்றி, புகழ் மற்றும் வாழ்க்கை முறை குறித்த மேலோட்டமான தரநிலைகளால் தொடர்ந்து செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. எனவே சமூகத்தை குற்றம் சாட்டுவதற்கு பதிலாக நெருக்கடியின் ஆழமான வேர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அன்னை பெசன்ட் ஒரு முறை வலியுறுத்தினார்,
கல்வியின் நோக்கம் ஒரு குழந்தையை வாழ்வாதாரத்திற்காக தயார் செய்வது மட்டுமல்ல, மாறாக குணத்தை உருவாக்கவும் மனித வாழ்க்கையின் ஆழமான பரிமாணங்களை விழிப்படைய செய்யவும் ஆகும். இன்று மனிதகுலத்திற்கு அவசரமாக தேவைப்படுவது இதுதான். வெறும் படித்த மனங்கள் மட்டுமல்ல, விழித்தெழுந்த இதயங்கள். இதை மிக அற்புதமாக விளக்கும் மற்றொரு அழகான கதை உள்ளது. ஒருமுறை ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். அருகில் உள்ள கிராம மக்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனைகள் பெற ஆசிரியரை அணுகினர். ஆசிரியரும் அவரது மாணவர்களும் அதை கேட்டு சிந்தித்து தங்களால் இயன்ற சிறந்த தீர்வுகளை வழங்கினர். இந்த விவாதங்களில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களில் ஒருவர் பொறுமை இழந்தார். இந்த மக்கள் மிகவும் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் தலையை அசைத்து விரக்தியுடன் கூறினார். உலகில் இவ்வளவு அறியாமை, இக்னரன்ஸ் இருக்கிறது. அவரது ஆசிரியர் இதை கவனித்தார். மற்றவர்களை தாழ்வாக பார்க்கும் இந்த நடத்தையை எதிராக அவர் தன் மாணவருக்கு அறிவுரை கூறினார். ஆனால் பலனில்லை. ஒரு நாள் மாணவரும் ஆசிரியரும் தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் ஒரு பெரிய மண்டபத்தை கடந்து உள்ளே சென்றனர். மாலை நேரம். மண்டபம் உள்ளே இருட்டாக இருந்தது. இங்கே நிறைய இருள் இருக்கிறது என்றார் ஆசிரியர். ஆம், இருக்கிறது என்று மாணவர் ஒப்புக்கொண்டார். ஓ, இங்கே நிறைய இருள் இருக்கிறது என்று ஆசிரியர் விரக்தியுடன் மீண்டும் கூறினார். மாணவர் குழப்பமடைந்தார். அவர் ஆசிரியரை பார்த்து, ஆம் ஆசிரியர், உண்மையில் இங்கே நிறைய இருள் இருக்கிறது என்று மீண்டும் கூறினார். ஆனால் ஆசிரியரோ அவ்வளவு இருள் என்று புகார் கூறத் தொடர்ந்தார். மாணவர் எரிச்சல் அடைந்து இறுதியாக சொன்னாராம், ஆசிரியரே, இருளை பற்றி கத்துவதால் அது நீங்காது. நமக்கு ஒரு விளக்கு தேவை. ஆசிரியர் புன்னகைத்து பதிலளித்தாராம். அறியாமைக்கும் இதுவே உண்மை. புகார் செய்வதால் மட்டும் அதை நீக்க முடியாது. நாம் ஒளியை கொண்டு வர வேண்டும். பிரம்ம வித்யாவின் மிகச்சிறந்த செய்திகளில் இதுவும் ஒன்று. மாற்றம் விமர்சனத்தால் மட்டும் நிகழ்வதில்லை. அது விழிப்புணர்வால், அவேர்னஸ், அதனால் நிகழ்கிறது. ஞானத்தால், இரக்கத்தால், உள் விழிப்புணர்வால். எனவே இயற்கையாகவே கேள்வி எழுகிறது, மனிதகுலம் இத்தகைய மாற்றத்தை நோக்கி எப்படி நகர முடியும் என்று. பிரம்ம வித்யா 3 மிக முக்கியமான பயிற்சிகளை வலியுறுத்துகிறது. கல்வி, ஸ்டடி, தியானம், மெடிடேஷன் மற்றும் தன்னலமற்ற சேவை, செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ். ஆனால் இந்த மதிப்புகளை திடீரென்று சமூகத்தின் மீது திணிக்க முடியாது. விதைகளை மெதுவாக விதைக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக குழந்தை பருவத்தில். முன்பு பெற்றோர்களும் தாத்தா பாட்டிகளும் பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு அர்த்தமுள்ள கதைகளை சொன்னார்கள். கருணை, தைரியம், ஞானம் மற்றும் அழகு நிறைந்த கதைகள். இந்த கதைகள் அமைதியாக குணத்தை வடிவமைத்தன. அதேபோல் இரக்கமும் ஒரு வாழ்வியல் அனுபவமாக மாற வேண்டும். உதாரணமாக, பிறந்த நாளை விலை உயர்ந்த பரிசுகள் மற்றும் விருந்துகள் மூலம் கொண்டாடுவதற்கு பதிலாக அனாதை இல்லங்கள், தேவைப்படுபவர்களுக்கான இல்லங்கள் அல்லது துன்பப்படும் சமூகங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள குழந்தைகளை ஊக்குவிக்கலாம். இரக்கம் என்பது கோட்பாடாக இல்லாமல் அனுபவமாக மாறும்போது இதயம் மெதுவாக மாறத் தொடங்குகிறது. மாற்றம் எப்போதும் மெதுவாகவே நிகழ்கிறது. விழிப்புணர்வு மெதுவாக வளர்கிறது. தியானம் மெதுவாக வளர்கிறது. இரக்கம் மெதுவாக வளர்கிறது. ஆனால் விழிப்புணர்வு ஆழமடையும் போது ஆசைகள் மெதுவாக மனதின் மீதான தங்கள் ஆதிக்கத்தை இழக்கின்றன. அப்போது ஒப்பீடு மறைய தொடங்குகிறது. உள்மோதல் குறைகிறது. மெதுவாக அமைதி வெளிப்படுகிறது. நவீன வாழ்க்கை மனித மனதை தொடர்ச்சியான தூண்டுதல்களால் நிரப்பி இருப்பதால் தியானம் இன்று மிகவும் முக்கியமானது. எங்கும் இரைச்சல், எங்கும் தகவல், எங்கும் கவனச்சிதறல். ஆனால் மிக்க குறைந்த அமைதி. அமைதி இல்லாமல் சுய புரிதல் கடினமாகிவிடும்.
தியானம் என்பது கண்களை சில நிமிடங்கள் மூடுவது மட்டுமல்ல, அது ஒருவரின் எண்ணங்கள், பயங்கள், எதிர்வினைகள், ஆசைகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை கண்டனம் செய்யாமல் ஆழமாக அவதானிக்க கற்றுக்கொள்வது, அதாவது தன்னைத்தானே புரிந்து கொள்வது. இத்தகைய விழிப்புணர்வு மூலம் மாற்றம் இயற்கையாகவே தொடங்குகிறது. திடு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒருமுறை கூறினார், உங்கள் ஆசைகளை வெளிப்படுத்தும் போது அவை உங்களுக்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கோ தீங்கு விளைவிப்பதை தவிர்க்க நீங்கள் கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று. இந்த புரிதல் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் பிரம்ம வித்யா ஒடுக்க முறையை கற்பிப்பதில்லை, அது விழிப்புணர்வை கற்பிக்கிறது. அது மனித குலத்தை கண்மூடித்தனமாக நம்ப சொல்லுவதில்லை, அது மனித குலத்தை விழித்தெழச் சொல்கிறது, கேள்வி கேட்க சொல்கிறது, கவனித்து வாழ்வை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள சொல்கிறது. நவீன இளைஞர்களுக்கு இன்று உண்மையில் தேவைப்படுவது இதுவே. வெறும் தகவல்கள் மட்டுமல்ல ஞானம், வெறும் சாதனைகள் மட்டுமல்ல அர்த்தம், வெறும் வெற்றி மட்டுமல்ல உள்ள அமைதி. எனவே இந்த எண்ணத்துடன் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். மன அழுத்தம் முழுமையாக தீங்கு விளைவிப்பதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தம் நம்மை நேர்மையான முயற்சி மற்றும் பொறுப்புக்கு ஊக்குவிக்கும். ஆனால் மன அழுத்தம் பயம், ஒப்பீடு, பேராசை, பாதுகாப்பற்ற உணர்வு அல்லது முடிவற்ற ஆசையாக மாறும்போது அது அமைதியை ஆழிக்கிறது. எனவே உண்மையான தீர்வு வெளிப்புற சூழ்நிலைகளை மாற்றுவதில் மட்டும் இல்லை, நம்மை நாமே ஆழமாக புரிந்து கொள்வதில் உள்ளது. நாம் மன நிறைவை கண்டென்ட்மெண்ட் மீண்டும் கண்டறிய வேண்டும். நாம் இரக்கத்தை மீண்டும் கண்டறிய வேண்டும். நாம் வாழ்வின் ஒற்றுமையை மீண்டும் கண்டறிய வேண்டும். பிரம்ம வித்யா மனித குலத்திற்கு ஆழமான ஞானத்தை வழங்கியுள்ளது. ஆனால் ஞானம் அன்றாட வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கப்படும் போது மட்டுமே அர்த்தமுள்ளதாகிறது. இந்த போதனைகள் நாம் உண்மையாக பின்பற்ற முடிந்தால் அமைதியான தனி மனிதர்களை மட்டுமல்ல, அதிக அமைதியான மனித குலத்தையும் உருவாக்க முடியும். எளிமையான ஒரு எண்ணத்துடன் முடிக்க விரும்புகிறேன். உலகில் இருள் இருந்தால் நாம் ஒரு விளக்காவோம். வெறுப்பு இருந்தால் நாம் இரக்கத்தை கொண்டு வருவோம். குழப்பம் இருந்தால் நாம் புரிதலை கொண்டு வருவோம். துன்பம் இருந்தால் நாம் அமைதியின் கருவிளக்காவோம். நன்றி. नंदरी, थैंक यू अभिनव। इसी के साथ हम अपने आखिरी वक्ता कृतिका के पास चलते हैं, जो हिंदी में अब इस पूरे टॉपिक का समापन करेंगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यही सच कई पुरानी परंपराओं या धर्मों में भी दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के 4 नोबल सच बताते हैं कि दुख वास्तव में अस्तित्व में है और इसके पीछे जो बड़े कारण है वो है हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट। इसी तरह पतंजलि के योगा सूत्र के अनुसार अविद्या को दुखों का प्रमुख कारण बताया गया है। असल में जब इंसान अविद्या यानी चीजों को सही तरह से ना समझ पाने की स्थिति में रहता है तो उसके अंदर अहंकार, अटैचमेंट, किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ के रखने की आदत और किसी चीज से नफरत या दूरी जैसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। और यही चीजें धीरे धीरे उसे कॉन्फ्लिक्ट और दुख में फंसाए रखती हैं। यहाँ इग्नोरेंस का मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है उसके पास बहुत ज्ञान हो, वो बहुत होशियार हो, फिर भी कई चीजें उसकी समझ से परे होती हैं। असली इग्नोरेंस यह है कि हम लाइफ की यूनिटी को देख नहीं पाते। जब इंसान अपने अंदर
झांकना या अपने डीपर नेचर को भूल जाता है, तो धीरे धीरे घमंड उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। और जब घमंड हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तो हम समाज से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और खुद से भी परे होना शुरू हो जाते हैं। हम खुद को धर्मों में, कास्ट में, संप्रदायों में, नेशंस में, अलग तरीके की भाषाओं में, पॉलिटिकल ग्रुप्स में बांटने लगते हैं। हम और वो के हिसाब से हम सोचना शुरू कर देते हैं, और इसी सेपरेशन की भावना से नफरत, हिंसा, जलन, कंपटीशन, वायलेंस और डर पैदा होता है। मानवता दुख इसलिए झेल रही है या इसलिए कर रही है क्योंकि हम अपनी बेसिक यूनिटी को भूल गए हैं। अगर हम अंदर से परेशान हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं और हमेशा चीजों को और परिस्थितियों को परेशान नजरिए से ही देखते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को और आसपास के माहौल को भी परेशान कर देते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उन 50 बच्चों का भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि हर जगह जहां 4 लोग की भले ही सोच मिले या ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सेम कास्ट के हैं, या अगर वो सेम कॉलोनी में रहते हैं, या अगर वो एक धर्म के हैं, या कोई ऐसा कॉमन फीचर उनको मिल जाए, तो वो लोग ग्रुप बना लेते हैं। इसलिए स्कूल में भी उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। अमीर बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है, मिडिल क्लास का एक अलग ग्रुप होता है, टॉपर्स का एक अलग घमंडी ग्रुप होता है। कुछ लोग तो रिलीजन्स के भी ग्रुप्स बना लेते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो हमसे, अपने बड़ों से और बूढ़ों से क्या सीख रहे हैं? क्योंकि बाद में तो हम उन्हीं बच्चों पे उंगली उठाते हैं, हम शिकायत करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी तो ऐसी ही है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है इनके अंदर, छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर पाते ये लोग। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और पब्लिक डिस्कशंस के द्वारा लोगों के दिल में और दिमाग में लगातार कई तरह से बातें डाली जा रही हैं, खासकर युवाओं के मन में। किसी घटना को किस तरह दिखाया जा रहा है, किसी बात को बार बार किस तरह बताया जा रहा है, और लोगों के अंदर किस तरह के इमोशंस उभर के आ रहे हैं, इन सबको हमारे सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो चाहें कह सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे एक्शंस की वजह से कल या आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हमारा हर विचार, हमारा कहा एक एक शब्द, और हम कैसी परिस्थितियों से कैसे डील करते हैं, ये एक एक चीज आगे आने वाली पीढ़ियों को शेप करने में अपना योगदान देती है। आज हम जिन वैल्यूज को आम बता देते हैं, वही कल के युवाओं के लिए वह एनवायरनमेंट बन जाती है जिसमें वो बड़े होंगे। एक तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने जैसा ही बना रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर हम डर, नफरत और लोगों को अपने से अलग ही समझने की बजाय उन्हें समझना शुरू कर दें, अपने अंदर करुणा लाएं, अपने अंदर एकता लाएं, ब्रदरहुड को डेवलप करें, तो दुनिया में कितना प्यार और कितनी शांति होगी। थियोसॉफी हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन ही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। थियोसॉफी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रदरहुड किसी जाति या धर्म या कौन कहाँ से आता है, कैसा दिखता है, कितना अमीर है या कितना गरीब है, इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कोई कहीं से भी हो, हमसे कितना भी अलग उसका रहन सहन क्यों ना हो, शुरुआत से लेकर अंत तक हम सब एक ही हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बात जब हमें समझ आती है, तो हम हर किसी एक जैसे हम हर किसी व्यक्ति को एक जैसा देखने लगते हैं।
बल्कि दूसरों को हम उस आम के गूदे जैसे देखने लगते हैं जिसकी बात शुरुआत में की गई थी। एक ऐसा मन जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है वो हमेशा पूछता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक मैच्योर माइंड धीरे धीरे पूछना शुरू करता है मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ। और शायद आज के यूथ के सामने सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ तनाव या स्ट्रेस नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। बहुत से यंग लोग अंदर ही अंदर खुद से पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। कुछ हासिल कर लेने के बाद भी मुझे अंदर से खालीपन क्यों महसूस होता है। मॉडर्न सोसाइटी में हमें बहुत सारी सूचना मिलती है लेकिन ज्ञान बहुत कम। हमें सिखाया जाता है कि किसी से कॉम्पीट कैसे करें, लेकिन बहुत कम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं या गाइड करते हैं कि खुद को कैसे समझना है, पैसे कैसे कमाएं, कामयाब कैसे बने। इस पर तो बहुत सारे पॉडकास्ट, टेड टॉक्स और किताबें लिखी गई हैं। पर शांति कैसे ढूंढें और शांत कैसे रहें, ये शायद बहुत कम लोग सिखा पाते हैं। और इसीलिए बहुत से यंग लोग बाहरी कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कैसे महसूस करते रहते हैं कि कुछ तो कम है, खुशी नहीं मिल पा रही है, और हमेशा एक खालीपन उन्हें खटकता रहता है। अगर कहीं प्रेशर चेंबर देखना है तो स्कूलों में जाइए। वहां लगभग हर बच्चा इतना तनाव, इतना कंपटीशन और इतनी घबराहट में रहता है कि मानो बचपन जीना ही भूल गए हैं। और अगर कोई गलती से खेल कूद में या आर्ट्स में या गानों में या नाचने में या अपनी खुशी और टैलेंट को ढूंढ भी लेता है तो उन्हें कभी उतनी तारीफ मिलती ही नहीं है। वो कभी उतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाते जितनी कि एक 100 नंबर लाने वाले टॉपर बच्चे को मिलती है। क्योंकि आजकल किसके कितने नंबर आ रहे हैं उससे उनकी काबिलियत को नापा जाता है। अगर कोई बच्चा 100 में से 99 नंबर लाता है तो कई माँ बाप पूछते हैं एक माँ कहाँ कट गया। 99 नंबरों की खुशी मनाने के बजाय उनका ध्यान उस एक नंबर पर चला जाता है जो कहीं कट गया। और धीरे धीरे बच्चों को लगने लगता है कि उन्हें मिलने वाला प्यार और एक्सेप्टेंस उनके लाए हुए नंबरों पर डिपेंड करता है। ऐसे माहौल में बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं। और फिर बाद में जब कोई यंग बच्चा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में या इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करता है तो हम ही लोग उन्हीं की गलती बताते हैं और बोल देते हैं आजकल की युवा पीढ़ी तो जरा सा प्रेशर भी हैंडल नहीं कर सकती। पर सवाल तो ये है कि इतना सारा प्रेशर आता कहाँ से है। लोग अक्सर कहते हैं आज का युवा लापरवाह है। स्मिता दीदी ने बताया कि जब उन्होंने बहुत यंग उम्र में सिस्टर सुवलीना की एक सेशन अटेंड किया तो उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए एक बात बोली जो स्मिता दीदी के जहन में रह गई। युवा लापरवाह नहीं है, उनकी परवाह कम की जाती है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। वो सोसाइटी से ऊंच नीच सीखते हैं, वे धर्मों से लड़ाइयां देखते हैं और शायद वही सीखते हैं। किसी विषय पर सोच ना मिलने पर लड़ाइयां देखते हैं, वो सोशल कंपैरिजन देखते हैं, वे भौतिक चीजों के पीछे भागने की आदत देखते हैं। और नेचुरली ये सारी चीजें उनकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। एनी बेसेंट ने एक बार कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पैसा कमाने के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उनके चरित्र का निर्माण करना है। हमें सिर्फ पढ़े लिखे दिमाग वाले बच्चे नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे दिल वाले बच्चे चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकें और महसूस कर सकें। एक बहुत सुंदर स्टोरी जो दीदी ने शेयर करी। एक बार एक टीचर थे, पास के गांव से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। टीचर और उनके स्टूडेंट्स दोनों मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उन पर विचार करते और अपनी सोच के हिसाब से उन्हें हिदायत देते कि अब आगे क्या करना है। उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट इन चर्चाओं में बहुत ज्यादा भाग लेता था। धीरे धीरे वह धीरज खोने लगा। वे अक्सर
सर हिलाकर कहता, ये लोग कितने नासमझ हैं, दुनिया में इतनी अज्ञानता है। टीचर ने उसका यह बर्ताव देखा। उन्होंने उसे समझाया कि दूसरों को नीचे नहीं समझना चाहिए, लेकिन उसने उनकी बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक दिन टीचर और वह स्टूडेंट रोज की तरह सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया और वो दोनों अंदर चले गए। शाम का समय था और हॉल के अंदर बहुत अंधेरा था। टीचर ने कहा, यहाँ कितना अंधेरा है? स्टूडेंट ने कहा, हाँ बहुत अंधेरा है। टीचर ने फिर कहा, ओ यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। उनकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। स्टूडेंट थोड़ा उलझन महसूस करने लगा। उसने टीचर की तरफ देखा और कहा, हाँ टीचर, सच में यहाँ बहुत अंधेरा है। लेकिन टीचर लगातार कहते रहे, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। अब वो स्टूडेंट परेशान हो गया। आखिर में उसने कहा, टीचर, अंधेरे के बारे में चिल्लाने से अंधेरा दूर नहीं होगा, हमें एक दीपक चाहिए। टीचर मुस्कुराए और बोले, अज्ञानता के साथ भी यही बात है। सिर्फ शिकायत करने से अज्ञानता दूर नहीं होती, हमें रोशनी लानी होगी। और शायद यही थियोसॉफी के सबसे जरूरी संदेशों में से एक है। परिवर्तन सिर्फ निंदा करने से नहीं आता, बल्कि परिवर्तन आता है जागरूकता से, ज्ञान से, करुणा से और खुद को जगाने से। तो नेचुरली सवाल उठता है, मानवता इस तरह के परिवर्तन की तरफ कैसे आगे बढ़ सकती है? थियोसॉफी में हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाया जाता है। SMS, स्टडी, मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस। लेकिन इन मूल्यों को अचानक पूरे समाज पर थोपा नहीं जा सकता। इनके बीज धीरे धीरे बोने होंगे, खासकर छोटे बच्चों में। बचपन से शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले माता पिता और दादा दादी अक्सर छोटे बच्चों को रात के समय या खेलने कूदने के समय मीनिंगफुल स्टोरी सुनाया करते थे। ऐसी कहानियां जिनमें दया, साहस, ज्ञान और अच्छे संस्कार होते थे, और उनका असर बच्चों के मन पर बहुत गहरा होता था। उदारता, दया, प्यार, ऐसी चीजें सिर्फ बताने की जगह अगर डेली प्रैक्टिस में लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अपने जन्मदिन पर केक तो सब काटते हैं, पर अगर बच्चों को तोहफे, पार्टीज और केक के अलावा अनाथ आश्रम या किसी ओल्ड एज होम में ले जाया जाए तो उनको लाइव एग्जाम्पल मिलेगा। बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, इच्छाएं धीरे धीरे हमारे दिमाग पर से अपना काबू खोने लगती हैं। फिर कंपैरिजन कम होने लगता है और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। आज ध्यान में बैठना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास हो रही चीजों ने हमारे दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन से भर दिया है। हर तरफ शोर है, जानकारी है, ध्यान भटकाने वाली करोड़ों चीजें हैं, लेकिन शांति बहुत कम है। और शांति के बिना खुद को समझना मुश्किल हो जाता है। मेडिटेशन या ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आंख बंद कर लेना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब खुद को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना होता है, अपने विचारों को, अपने डर को, इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को बिना खुद को किसी कटघरे में खड़े करे समझाना होता है। ब्रदर जे कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, अपनी डिजायर्स को व्यक्त करते समय आपको इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि आपको या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थियोसॉफी हमें इच्छाओं को दबाना या मार डालना नहीं सिखाती। थियोसॉफी हमें जागरूकता सिखाती है। ये हमें ये नहीं सिखाती कि आंख बंद करके विश्वास करो, पर कहती है, जागो, उठो, सवाल करो, देखो और जिंदगी को गहराई से समझो। और शायद आज का यूथ वास्तव में यही चाहता है। सिर्फ ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि ज्ञान। सिर्फ कुछ पा लेना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ। सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि मन की शांति। तनाव अपने आप में पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं है। थोड़ा तनाव अच्छा होता है।
अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब तनाव, डर, तुलना, लालच, इनसिक्योरिटी या फिर कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हमें घेर लेती है, तो वो हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है। इसलिए असली हल सिर्फ हमारी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, असली हल खुद को गहराई से समझने में है। हमें फिर से संतुष्ट रहना सीखना होगा, हमें फिर से करुणा या कंपैरिजन सीखना होगा, हमें फिर से समझना होगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थियोसॉफी ने मानवता को बहुत गहरा ज्ञान दिया है, लेकिन ज्ञान का तभी फायदा है जब हम उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं और इस्तेमाल करें। और अगर हम सच में इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार पाए, तो शायद हम सिर्फ खुद की शांति ही नहीं, बल्कि अधिक शांतिपूर्ण मानवता का भी निर्माण कर पाएंगे। अगर दुनिया में अंधेरा है, तो आइए हम दीपक जलाएं। अगर नफरत या घृणा है, तो आइए हम प्यार और करुणा फैलाएं। अगर भ्रम है, तो आइए हम समझ लेकर आएं। और दुख है, तो आइए हम शांति का साधन बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से एसएमएस हम सबके पास एक बहुत ज़रूरी नया ओटीपी भेजे, which is old theosophical practices. And with that, I would invite all the three speakers of the day to share their thoughts within a few words, if they want to, any outside the amazing content that they have already shared with us. So the floor is open to the three of you guys. Anyone? ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक चीज कहूंगी कि जो हमने पहले भी बोला है मैंने कि हम लोग ये जो सोसाइटी है उसको अपने इमेज में ही बना रहे हैं। और अभी रिसेंटली तो आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज में, वो जो जंतर मंतर वाला वो था, वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो वीडियो जो था, वो जो न्यूज में जो आ रहा था, वो कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, पर वो बच्चे प्रोटेस्ट करने के टाइम पे इतना मतलब लाठीचार्ज जो भी हो रहा था, जो हर्ट हो रहे थे, चोट लग रही थी, फिर भी जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाता था, तब जाके जो सीआरपीएफ जो थे उनको पानी देते थे, खाना ऑफर करते थे। तो वही है, ये चीजें ना अचानक से नहीं आती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है और वो बचपन से वो सीड बच्चों के अंदर डाली जाती है। ठीक है, जो हम आजकल कहते हैं जेनजी, वो हाँ ठीक है, वो लोग बहुत मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो हमारे जैसे ऐसे नहीं सोचते किसी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, ये थोड़ा हम लोगों को अटपटा जरूर लगता है कि जबान के तीखे हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर कुछ चीजें उनमें ऐसी भी है जो कि सीखने लायक है, जो मैंने वो न्यूज में देखा था। तो बस वही है कि यूथ जो है, अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ मतलब अच्छा करना है, हम चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ मतलब इम्पैक्टफुल करे, पीसफुल हो सब, तो वो सीड जो है वो उनके अंदर बचपन से ही डालना पड़ता है। बस उतना ही कहना। Thank you, Smita. Abhinav, Kritika, if you have any further thoughts. Slightly loudly, Kaustubh. Abhinav, Kritika, if you have any thoughts on this. I do agree with Smita Di on some of these ideas on seeding for making them understand and have good things which will influence their future personality and behavior because of that. But I also believe that a majority of us who are trying to understand Theosophy or ourselves,
we are actually already having not just the seeds, but we have some parts of that in our personality, like trying to do good things, meditating, or not doing anything like harm for others. On one side, we are extremely disappointed with the world, how it treats us or our behavior. And we are trying to solve the problem by bringing in the change within us. So in a way, we're already a part of the solution. But a major issue that we all have, I mean, at least I have, I don't know, we all of you are enlightened beings who probably don't have this issue, but I have this issue. I keep forgetting. Majority of the time, of all the items that have been shared here, do you think all of us don't know any of this? All of us know this. We all know we have to meditate. We all know that we have to donate. We all know that we have to study, but we're not doing anything. Or at least we forget. So forgetfulness is the disease that all of us have. The only thing we can do is remind ourselves every day that this is what is there. In fact, if you do SMS, then there is no need for even this discussion. There is no need to meet on Zoom. There is no need for any lodge also to function. Everyone can keep doing it. The only purpose behind having a lodge or a society or meetings like this or having conventions is essentially to remind ourselves and motivate each other to do this. So I hope we remember at least this idea that we have to remember. I know it seems like meta. You have to remember that you have to remember. So we have. So that is the only feedback I have. Thank you. Lovely thought. Thank you so much, Abhinav. Yes, Kritika. मुझे भी वही बोलना था कि सो बेसिकली जेनजीज को सब कुछ पहले से पता है, ऐसा आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं पता होता है वो तो फोन उठाया और एआई पे सब मिल जाता है। जो हम लोगों की दिक्कत है कि हमें बहुत ज्यादा पता है बट हम उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आई थिंक जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग बात कर पा रहे हैं, बट ओवरऑल जो टीएस के बाहर की दुनिया है वहां पे ऐसे फोरम्स होने चाहिए कि लोग अपने विचार रख सकें, खुल के बात कर सकें, और जो भी हमें नॉलेज है वो हम उनको शेयर करने की बजाय कुछ प्रैक्टिकल चीजें कराएं। तो यूथ के लिए वो, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, बस कोई कुछ फॉलो नहीं कर पाता। एसएमएस, जैसे कि ब्रदर अभिनव ने बोला, एसएमएस इज द इजीएस्ट थिंग टू रिमेम्बर बट येट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो। तो दैट इज इट। आई थिंक यूथ शुड बी मोर एक्टिव। Thank you so much, Kritika. I'll open the floor for the broader participants. Before that, one. हाँ तरल जी बोलिए। नहीं आप बोलिए, पूरा कर लीजिए। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, सिंस टॉपिक यूथ है, आई वुड वांट फॉर द डिस्कशन टू बी मोर ब्रॉडर एंड नॉट लिमिटेड टू जेन जीज। आई अंडरस्टैंड सब लोग यूथ को जेन जी के साथ रिलेट कर रहे हैं, बट the folks who are beyond that generation also face these challenges and issues. So if we can generalize it or make it more implementable across generations, I would love to have that side of that discussion as well. That's it from my side, but opening the floor to the participants, Okay. Whoever wants to share their thoughts. Thank you, Kaustubh. Thank you, Smita. Thank you, Kritika, and thank you, Abhinav. आप सब सचमुच बहुत अभिनव और एक तरह से फिलोसॉफी को आगे ले जाने वाले, ब्रह्म विद्या को आगे ले जाने वाले हमारे सूत्र हैं। और जेनजी की बात निकली है तो आई वुड ओनली से दैट कि आपकी सारी कहानियों में उदाहरण था कि पास्ट से प्रेजेंट सीखता है और प्रेजेंट जब इम्प्लीमेंट करता है तभी वो बात बनती है। आपने खुद वो सॉल्यूशन दिया कि पास्ट जो भी हमारा एंशिएंट विजडम है उससे हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग करना, अंदर धारणा लेना जरूरी है, और उस धारणा को जब हमारे बुजुर्ग हम तक पास करते हैं, हम दूसरों तक पास करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल कैसे हो।
इसलिए मैंने एक शब्द निकाला था इस बार, वाक्य जो मैं न्यूज़ चैनल में लिखता हूँ कि कल्टिवेटिंग थियोसॉफी इन डेली लाइफ। तो जब तक हम उसकी उसको हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक पौधे के स्वरूप कल्टीवेट नहीं करेंगे, तब तक शायद हम ये डिस्कशन करते रहेंगे कि किसको आगे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत शानदार सेशन था, एंड आई होप कि मैंने जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बीच में डाला उससे आप लोगों को कुछ मजा आया होगा, थोड़ा वो बना होगा। सॉरी, मैं थोड़ा ताज़ा इसलिए दिख रहा हूँ कि आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रहा हूँ। और इसलिए उसको हिंदी में नहीं पूरा कर पाया और अभिनव को भेज नहीं पाया कि तमिल करेक्शन करेक्ट करो। लेकिन अगली बार स्मिता की तरह मुझे जो भी जल्दी एंटायर स्पीच मुझे भेजेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीजें हो। एंड नाउ आई विल लाइक टू इनवाइट another young viewer, Mary Kay, to say something. So, hello everybody. I did not understand 2/3 of what you said. um, but that what I do understand, I agree with Abhinav that, we are talking about youth, but youth is the next, the regular people and the old people after that. And the old people are the next youth. So, I mean, can we really talk about youth in that sense? We are talking a human being, we are talking a soul. And in that sense, youth, because youth is maybe more exposed to this technology than the older people, and they will have the lifetime ahead to be. But the old people now will be the next generation, or maybe in the future, and they will born in a different kind of world that is already, they will be exposed like from the birth. And I don't know, like how the AI is evolving, like how will be the life in few hundred years and so on. Like this thing is evolving so much. Like I was just thinking what Abhinav said about this forgetfulness, and another thing, like if you die, what is what you take with you? You cannot take anything in physical. You cannot take any of your riches. You forgot the things you learned, but you do take the habits. The habits, if you forget and you pick up again. I forget to, I don't know, read or exercise, but then now I remember, now I do it again. But this kind of thing you took with you, this kind of, readiness to go on, even if everything is not perfect. And I wish we all will have it. Thank you. Thank you. Thank you so much. And now, everyone who would like to speak. Yes, Vimal ji. No need to praise Smita. You all know it. It was a very, very good talk. But what I'd like to really say is, what does Theosophy teach us? What it teaches us is our thoughts are in our atmosphere. Repeated thoughts, our own thoughts are affecting us. Now, when we see our phone, we see a certain algorithm of a set of things that we are following. Okay. A generation before this is following something else. We ourselves follow different. If we have couple of different accounts, different things are coming in different accounts. In one account it is pro Gen Z, another account it's pro the opposite side. What is the truth is up to each of us to understand. But what I feel in this is, what Theosophy teaches us is, this whole business, this hot atmosphere that we create, that is all we are really responsible for. So once we make new channels of thought, for example, the idea that, okay, one can celebrate a birthday in a different way by doing some donation, going to some place where doing something good for somebody else. Or one can just be totally hedonistic and just splurge on oneself and one's
friends. Two alternatives are there. One gives temporary joy to me, one gives temporary joy to somebody else. You can make your choice. This one if this one is leading you to pride, it's bad. But if this one is leading you to pride, it's equally bad. So it isn't just the action, it is the result of the action, the thoughts that get created by the action. So I think it's one more thing that I'd like to say is every generation is better than the previous generation. 100%. I'm better than my parents. You guys are better than me, and the next generation is going to be better than you. Why? Why? Because each generation fights for the freedom of thought. I fight for my freedom of thought. You fight for your freedom of thought. And that's why you are more to the truth than I am. I am more nearer the truth than my father was. And let me assure you, my father was equally rebellious with his father. So he was also more to the truth than his father. So it's okay. This is how every generation we are improving. But we have to shake the burden of the previous generation from us. It is the previous generation which makes you all think comparison. Shake that out. See that it's coming from a previous generation, not just from your generation. That is what I'd like to say. That free yourself from the mistakes of your previous generation. Correct. Thank you. Yes, before Ashudan Bhai can and Shinde ji say, Kaustubh, your thoughts on today's subject? And good, wonderful, today you showed your talents. I found the topic very relatable. There is a lot that goes on when we think about this particular topic in our mind. Probably we can have a part 2 as well. I would love to, for Smita to have one. There are a lot of challenges. Probably we did not have the time to touch upon, even though we did cover a lot of ground. And yeah, if there is one, I look forward to that session. Okay, thank you so much. Yes, Ashudan Bhai, please go ahead. We have some time. Should I say or Siddeji is speaking? Anyone? Shinde ji? Yes, Siddeji is there. You want me to speak before? Yeah. Okay. I am very happy to listen to the youths. They are really youths. What is youth actually? Youth is energy. It is intellectual energy, it is emotional energy, it is passionate energy, it is the energy of discovery. So this energy must be properly directed. And that is what you mentioned, the 3 steps: study, meditation, and self-service. But Kritika said, it is easy to say, but it is very difficult to follow. Correct. She said that one. But I say, it is not difficult to follow. It is actually our nature. We are having that energy of inquiring, going deeper and deeper and deeper. That energy itself is the study. That energy itself is the process of observation. And again, we take rest. This rest is the period of reflection. So when this inquiry is not only a curiosity, but it sets into a real inquiry, deeper inquiry, and that needs some rest. And that rest is meditation, that rest is reflection. So we, with our energy of discovery, we undergo to find the real purpose of life, and there is a lot of pressure around, and therefore we balance it.
It is to attach effort to service. Balancing is we are attaching efforts to service and not to status. Once you understand this process, curiosity turns into inquiry. Inquiry needs rest. Rest is meditation. And we must balance this all effort to service and not to the status. So if you understand this process, then youth culture today needs theosophical perspective to cultivate such kind of sustainable enthusiasm. We should not lose our enthusiasm, sustainable enthusiasm. So this rhythm involves to understand beauty is goodness in behavior, beauty is goodness in conduct, beauty is goodness in action. So this is again, these are the steps of study, meditation, and selfless service. So that which is abstract, remember, always covered with veils. What are those veils? One must inquire. Those veils are of ignorance, of selfishness, of self-importance, of self-projection, so and so on. So once we understand this, then what we say, study, meditation, selfless service, it becomes our nature. And youth get this kind of sustainable enthusiasm in his life. So all three speakers, they were very passionate to put before us all what they want to put to hold on this online. I am very happy to see their enthusiasm, their energy, their passion. Really, they are worth congratulating. Thank you very much to all of you. Yes, thank you, sir. Thank you so much, Shindeji. And quickly, before Harshvardhan bhai say, Archana, do you want to say anything? No. Okay. Should I say? Yeah, go ahead, Harshvardhan. Okay. All the felicitations to KAUSTUBH, KRITIKA, Smita, and ABHINAV. Really wonderful, and I must congratulate Taralji. You just told that you were feeling better now, and due to that, your particular time when you were there with the treatment, and you handed over this responsibility to KAUSTUBH to moderate this particular program. So congratulations again. That is the energy. It is the energy of the youth. And KAUSTUBH did it in a better way. And I must congratulate in this way that his energy that was there to have the concentrated program with all the three speakers. And of course, Smita spoke in English so very nicely, giving the example of the mango and the 99 and the energy and stressless life and SMS. These all kind of things are there. From time immemorial, if you say the people there during the time of Socrates, he also asked questions to the youth. Why he not ask questions to the old people? He only asked the questions to the youth. There were also Gen Z. And another terminology came in the 20th century earlier, that was the generation gap. During our time, we heard the word generation gap. When I was only 21, I heard generation gap. So here, with the terminology, with the time passes by, with all the terminology changes, with the technical aspect, with the new things coming up in our social life, in our economical life, in our daily routine life. So what about the person's particular focus? That Theosophy teaches. That is the main thing. If you have any idea, you should have the stress. If you have the stress, you can be dynamic. And if you are dynamic, you can be either scientist or a doctor or an advocate or a teacher. Without any kind of training, you cannot do anything. So all the youths require the particular training. Training in the sense that can be very useful in the society. You should not be trained as
a gun. You can have the training of cutting, being the pickpocket. Not like that. You must have the training in the decent way. Even if you are a doctor, you should have the training of morality, moral standards. If you are a teacher, you should have the training of the classroom teaching in the best way, so that there should not be such problems with the particular exam, NEET or whatever is there. So NEET was not NEET. So in that way, why this kind of moral sense should be there? And it is highly connected with the Gen Z, with the Middle Ages, and with the people who are there working as the senior citizens. So that is the welfare of nation. What is the welfare state? That is also highly qualified, highly in that way graded, and the best welfare state should be there where we have to live. So we live not in the geographical atmosphere. We live not in the particular atmosphere where the land changes, where the atmosphere changes, but we must have that particular mental ability to lead the life of selfless service, of our own study, and of our own learning. And there we must have the honor for our old generation, and the old generation should teach their new generation to be honored, not to be discarded. And in this way, a small boy cannot have that condition where he should be discarded. A small child should be encouraged. So in the school, they should be encouraged. They should never be punished. So what Dr. Annie Besant just told during her time, and she created that kind of youth forum. And in that way, she gave a kind of guidance. And since then, we also understand so many things. So this is matter of discussion. But at the point, if you have the energy to sustain ourselves in the way, in what profession should be there, so feel that you are there at the top. And mentally you are prepared, and mentally you are cooperating, and mentally you are learning so well that you are going to invent so many new things. And in that way, that should be the unique results in that way. And these unique results will not bind you to that limited sphere, but it would create that kind of atmosphere what Vikram Sarabhai did, what Newton did during that 16th century, what Columbus did. He wanted to come to India, but went to America. That was a Gen Z at that time. Columbus was a Gen Z. So in that way, we can understand. So let us understand so many things. Okay, time is very short, and really, it requires a kind of very particular time for us to say something more in deeper sense. Thank you very much. Yes, Archana ji, since the time is already much, please go ahead. समय होने आया, पर मैं एक वाक्य बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी। तीनों वक्ता और चौथी मैरी के जो उसने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, आप लोग इतने सहज हैं। फॉर मैरी के यू ऑल आर सो सिंपल एंड very sahaj is just simplified way of talking, which we have forgotten eventually. So thank you for reminding that we can be simple and spontaneous in talking. So we all will pray. सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thanks to all. Thank you. Thank you so much. Or Smita, you mentioned Buddha. So the next week, Tuesday session is on Buddha. Okay. And we are waiting for the part 2. Yeah, of this thing also. Thanks Good night. so much. Hello. Thank you. So much. Take care. Smita, you mentioned Buddha.